So compound sentence making up. Like my name is Divya and I am from company called Entrepreneurship. Okay. Ya, ano speaker po. सुना है मेरे को चालू नहीं है ना अरे पागल बना देगा।
पार्टिसिपेशन घटता जा रहा है। लिख रहा है मनी कुमार मन। चैट में देखिए क्या आ रहा है। अच्छा, आप मैसेज कर सकती है, मैसेज आया हुआ है।
सर क्या संख्या है? समझी गए? आप क्या बोले थे नहीं? कितना साल का है? 2008 में पैदा लिया था, जोड़ लो ना। 450। ये माइक्रोसॉफ्ट से बनता है। 3D illustration क्या आईडिया बनाना है? मिल जाएगा। तो इसलिए टाइम देंगे।
Hello, I'm audible. A very good morning to one and all present here on this platform. I am Lalit Pramar, Assistant Professor, Department of English, MSKB College, here at Bihar University, Muzaffarpur. And it's my absolute pleasure to extend a very hearty welcome to each one of you present here on this platform to participate in the seminar on the topic, Exploring the Nuances of Skill Development in Unleashing Entrepreneurship. We're thrilled to witness such enthusiastic participants and a highly learned audience gathered to deepen their understanding on the significant topic. Today's seminar on exploring the nuances of skill development in unleashing entrepreneurship aims to bring to light various aspects associated with the topic, thereby sparking thoughtful discussions and stimulating new ideas. Plus, still joining. All the new participants are very cordially welcome here. Hope you all have a very good, interesting, enlightening experience with us. I would like to share just a few points about this seminar as to what it all is concerned about. Our college, Mahila Shilp Kala Bhavan, as the very name suggests, it was founded in 1965 by the first President of India, His Excellency Dr. Rajendra Prasad, with an optimistic vision to impart skills like sewing, weaving, and other crafts to the downtrodden women of the society. The main objective was to train them for job opportunities and to enable them for earning their livelihood. Along with these crafts, the traditional education was provided to the girl students so that they could also obtain the requisite degrees. MSKB College presently also runs various vocational courses like beautician, Madhubani painting, and fashion designing for enhancing different skills, empowering every citizen to be a catalyst for change. This is the tagline of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship of the Government of India. In the present era, it is the need of the hour to cultivate new skills in the students so that they can empower themselves and become job givers rather than job seekers. The ministry looks forward to achieving the goal of skilled India. It is necessary to build the vocational and technical training framework skill upgradation, building of new skills and innovative thinking, not only for existing jobs, but also for jobs that are to be created. In the new undergraduate CBCS course implemented at the Bihar University in 2023, the students are asked to opt for a paper on skill enhancement. Thus, this seminar focuses on reaching out to the students who can get to know how to hone their skills, and they will also get to know source and government aids that can be provided to them for acquiring certain skills. Now, we hope that this is really going to be enriching and enlightening for all the participants. And with these few words, I once again welcome all present on this platform for this seminar. And I would now like to request our President, our Principal, MSKB College, to formally welcome the dignitaries present here. Good morning to all of you. Good morning to all of you. I, Dr. Lokman Ravin Pratap, welcome you all to the 3 days international seminar on exploring the
nuances of skill enhancement in unleashing entrepreneurship. The seminar is a joint venture of Department of English and Department of Economics of MSKV College Muzaffarpur. I I am really overwhelmed to inaugurate this seminar, which is being conducted through online mode and today being a 28th of March, we formally inaugurate the international seminar. An extremely renowned and intellectual group has joined us today, and I would like to welcome first of all our international speaker of today, Mr. Shyam Singh from USA, who is an entrepreneur and also a scholar. Next, I would like to welcome our proctor from BRA University Muzaffarpur, who is also the HOD of English is from BRA University, who is also the HOD of English, Department of BRA University, Professor B.S. Rai. I would I would also like to welcome Professor Madhu Salni from PG Department of English, BRA University, Muzaffarpur. We also have with us today Dr. Mukund Kumar, Assistant Professor Economics from Ellen Mithila University, and last but not the least, we have Mr. Arvind Kumar, Master Trainer from Institute of Entrepreneurship Development, Government of Bihar. I would like to welcome you all plus all the participants who have joined from different parts of the nation. A warm welcome to all of you. Thank you. Thanks a lot, sir, for delivering such a wonderful welcome note. And now I would like to invite our chief guest, Dr. B.S. Roy, sir, on behalf of MSCB family. Dr. B.S. Roy is also doctor here at Bihar University. He is also serving as the head of PG Department of English at the university. I'm delighted to introduce guest who has graciously accepted our invitation to join us on this platform today. Sir is an alumni of the Bhagalpur University and has availed many accolades and merit scholarships to his. He has served at the Jain College, Arunachal University, and has been serving in the GRA Bihar University, Muzaffarpur, 2003. He is in the PG Department of English, Bihar University since 2009. Sir has given his much solicited and able guidance to a number of research scholars to generate new concepts, authorities, and understandings so that it leads to new and creative outcomes. His highly acclaimed research papers have been published in various national and international journals. Sir has to his credit the publication of more than 3 books, which are popular in the Heritage Society. With this, I would like to invite our honorable chief guest, sir, to present your views here. Sir, please. Thank you, madam. Good morning and a warm welcome to each one of you. It's truly an honor to be here today among such esteemed guests. Dr. Shyam Singh from USA, Dr. Madhu Salni, my friend, Principal E.L.R. Pratap, MSKB, Dr. Mukund Kumar,
Mr. Arvind Kumar, today's speaker, Organizing Secretary Dr. Vinamrata, and Joint Secretary Dr. Lalit Prabha ji. Other also who cooperated to organize this seminar, Mrs. Ritu Verma and Mrs. Silpa Bharti and all participants. We are here to discuss a topic that resonates deeply with the spirit of India, exploring the nuisance of skill enhancement in unleashing entrepreneurship. Really, it is a very burning, very interesting topic because our country is going right now to develop in this field to skill so many persons. In a diverse country like India, entrepreneurship holds a special place as a catalytic for economic empowerment, social transformation, and nation building. When we talk about fostering entrepreneurial skills, it is essential to recognize the role of communication skill and personality development in shaping the success of entrepreneurs. There is a problem of sound, or is it clear? Is it clear? Clear, sir. Okay, thank you. In shaping the success of entrepreneurs, effective communication skills are the cornerstone of entrepreneurship, enabling entrepreneurs to articulate their ideas, persuade the stakeholders, and build meaningful relationships. Educational institutions can play a crucial role in nurturing communication skill among students by integrating communication training into the curriculum. Through workshops, public speaking forums, and debate competition, students can hone their verbal and written communication skills, develop confidence in expressing their ideas, and learn to communicate effectively. Moreover, personality development is integral to the entrepreneurial journey as it shapes the mindset, behavior, and leadership quality of entrepreneurs. Educational institutions can offer personality development programs that focus on self-awareness, emotional intelligence, and interpersonal skills, empowering students to become effective leaders. By fostering a culture of self-reflection, feedback, and personal growth, educational institutions can instill the values of resilience, adaptability, and lifelong learning among students. Furthermore, educational institutions can cultivate an entrepreneurial mindset that encourages the students to embrace innovation, take calculated risks, and pursue their passion with purpose. It is also essential to recognize the crucial role that government initiatives play in supporting these efforts. The government of India has launched several flagship initiatives aimed at promoting entrepreneurship, skill development, innovation across the country. Programs such as Startup India, Skill India, Atal Innovation Mission are some well efforts in this direction. Especially the Skill India initiative is a transformative initiative that focuses on skill development and vocational training to empower youth with the skills and knowledge needed to succeed in the modern economy. By partnering with the industrial stakeholders, educational institutions, and training provides, Skill India aims to bridge the gap between demand and supply of skilled manpower and create a workforce that is job ready and globally competitive. Moreover, the government has introduced various policy measures
incentives, and a scheme to support entrepreneurship, including tax incentive for startups, ease of doing business reforms, access to finance, and many other such policy measures. With this, I want to conclude my speech with hope and belief that our youth will contribute their best in the nation building. Thank you very much, all of you, to give patience listening. Okay, thank you very much. Thank you very much, sir, for your inspiring words and the enlightening ideas that you have focused on our seminar topic. And now I would like to focus on the next speaker, our guest of honor, Dr. Shyam Singh, who is from the USA. I heartily welcome you, sir, and I would like to introduce you, who is our guest of honor for this seminar. Dr. Shyam Singh, who is an NRI, presently settled in the USA. He is an alumni from the IIT, BHU, Varanasi, India, and Pennsylvania University, Rockford. Shyam sir is a successful entrepreneur and president and chief marketing officer of the thermoplastic company. I'm sure he has many valuable life lessons to share with us, and also his enriching experiences will make this seminar fruitful. So please do share what you think about the do's and don'ts of nurturing a bright and successful future for our participants. Welcome, sir, once again. A very good morning to all of you. And I hope you all had a great Holi celebration and full of colors. When Dr. Vinamurthy asked me to talk about this subject, entrepreneurship is a very rich and very broad subject. One can take from farming to weaving to customer service to manufacturing. So what I'm going to do is to split the entire talk in two parts. One part will entail to general ideas about what is the meaning of to be an entrepreneur and what does it take to be an entrepreneur. And the second part will be to give some examples in the community where you live, may it be a farming, may it be in manufacturing, and what does it take? What does it take to make your life successful? Not necessarily financially, but what you like to do is to be happy doing something that every day you like to do. Can you hear me very well or no? Hello? Can you hear me? Yes, sir. Okay, Yes, thank you. Thank you. So I am going to give you a quote from Albert Einstein. You all are familiar with his name. And once he said that a person who never made a mistake never tried anything new. A person who never made a mistake, he never tries anything new. Entrepreneurship is an inherent quality of a human mind. And human mind is a huge reservoir of knowledge. When I say knowledge, not necessarily to get a degree or multiple degrees, but the knowledge that you inherit with, in your classroom, in your community, with your family. And if you begin to define the entrepreneurship, you can take an example of a great man, which I'm going to talk about a little bit. We all know Steve Jobs, who was basically, from the educational point of view, he did not do very well in education.
Means that academically he was not very successful, but he was constantly looking for coming up with the ideas. And the ideas were not necessarily developed by a focus group studies. In other words, whenever you come up with an idea, many of us have a tendency to believe that let's talk to the people in the marketplace and then come up with the ideas. He was very contrarian to that idea. All he did was he wanted to explore things to do in a way that has never been done. And he made a passion for that kind of idea, and it resulted in a huge success of his career when he died in just mid-50s. I'm sure you all know that everything that you see these days, iPhone, iPad, iTab, whatever you do these days, it was all his ideas. It was not driven by market. It was driven by his reservoir of ideas that he always felt very strongly that a man should not just limit himself, or a girl should not limit herself just because what she was told to do. She should focus on the very deep thing that she believes in. She should love what she does. She should go to school, of course. She wants to have a disciplined way of going to school, get education, but that is not the reason that you go to school. The education is not a graduation. Education is to cut the knowledge and use it every day in your life, whether it's in a family life, whether it's a life that you want to hang around with people. And you will find out that whoever has come up with the ideas, I'm sure you know Thomas Edison also. He was only a high school graduate. But his ideas were not just the ideas on piece of paper. His ideas were not just a piece of patents, but his ideas are still today burning topics, and people do the work using the basic understanding of what he developed. And that was because he was curious. What I'm trying to say to students, particularly students, that you should never limit yourself with what you see and what somebody else tells you to do. You should try. You should try your knowledge, what you learn, because again, I have said this before, earning is only possible when you have a learning. And learning never ends. No matter how old you are, no matter where you live, no matter how rich you are. I'm sure we all know Tulsidas today wrote Ramacharita when he was 75 years old. I'm only giving example for the students because please do not limit yourself. You march on the belief that you feel very greatly that I am going to do it, regardless of whether you are a person from poor family, from a rich family. That should not bound you to stick to your given order from others. Explore the idea. That is called entrepreneurship. Entrepreneurship is also something that is risk-taking. Nobody can be successful unless you challenge yourself and find out what is there to learn from. You will make a mistake for sure. Nobody can develop an idea overnight. Nobody can do a marketing scheme overnight. I go to Delhi, when I come from US, I go to Delhi and stay in some of the places. I find these ladies who come in the morning, do the cleaning. That is no less than entrepreneurship. That lady has 10 customers, gets 2,500 rupees from every customer. That's a 25,000 rupees. She did not go to college. She did not go to a scientific school, but she has an idea to go and serve the people and get paid for that. That is called entrepreneurship. You can have a tea stall. You can have a small retail shop.
A small detail shop doesn't mean that, you are just selling 3 yards of the clothing and 4 yards of the clothing. The idea is to explore the possibility that is out there by using the means available to you, around you. And when I'm giving an example, last time I spoke about it, I came from village myself, and I said it last time. We did not have any kind of resources that you need to do the great things. But we did have one thing, is the support system of our family. When we say support system, you have parents who are behind you. They want you to be successful. They want you to go out and do the good things. Not necessarily only in the business world. One can go out, become a great, soccer player. The one can go out and make people laugh at the time. I think it's a mistake to only think about that you have to be entrepreneurship because you make a lot of money. Money is a product of the hard work. Money is a product of what you do in your life, making other people happy. Be happy yourself. Do things that matters to you every day. When you get up, you feel like you have done something to the society that you live in. You get up in the morning, walk around and see the happy faces. And the happy faces don't happen unless somebody makes other people be happy doing things that you like to do. For example, farming. I am not from Muzaffarpur area, but I know what the areas are. A farmer gets up in the morning, his whole idea is to get up, take care of, his cow, taking care of an auction, go to the field, use your tractor, do things, and at the end of the day, he feels that hopefully after 3 months, I will have a good crops. He did his best, but some things are out of his control. You cannot stop a heavy rain. You cannot stop drought. You cannot stop people burning your farm because they don't like what you do. What you can do is never quit. And that's what Steve Jobs did. That's what Albert Einstein did. If you have all read his story, he was not fond of always learning from a teacher. In fact, he used to get very bad grades when he was 10 plus 2. My whole idea of talking here is to make sure the students, particularly, you have the treasure of knowledge. You have the ability to do things. I always encourage people. In my company, I work with the people, not necessarily sitting in the office and just giving them the order. I go in the manufacturing area, I stand by with them, I pick up some work that they are doing, because if you show the leadership, that is called entrepreneurship. If you show the people, let's do it together. People who work with you, they love to see you. They love to see your kindness towards them. You can make a production going a much higher degree if you work with the folks that you are standing by. They have a great respect for you. I'm not here to talk about my business, but thing is that I went through years of working with those people. Now I'm successful because they have made my life to be successful. Every person who works with you, no matter how small, I always say the hospital has no meaning if the sick people are not there. The nurses have more to do things, not just making money, but serving people with a loving heart. And that's entrepreneurship. When you walk in the classroom, when we have some fantastic teachers, I'm sure you do also,
When they walk in the class, people are happy to see them. They like to listen to them. They like to learn from them. They have a great communication with them. And this is something that communication, obviously, in entrepreneurship is also directly related to how do you communicate your ideas so that anybody who can understand, you don't have to write, a complex differential equation. You don't have to write a sophisticated, algebraic equation. You make life simple because you want to live simply a happy life. And the happy life is work hard, definitely work hard, but do not try to limit yourself. A girl, for example, let's talk about the young girls. Of course, they are going to college. Of course, they are going to get a degree. Is it not true that the girl, she is the best in doing sewing, weaving, and if she's doing a side job, I'm very sure she can make, at least 20,000, 25,000 rupees a month without any hitch. If she communicates her own skill by doing work, showing people that I can do this thing with passion, not just doing the work, but with a passion. Because passion makes also a fashion. I have this experience with one of my family members. She's great in doing things by hand. She's not the highly educated person, but she has an artistic way of thinking about how to make a clothing. For a young girl, she should not just say that, I got to be, an IAS officer and PCS. Absolutely not. You enjoy what you do. You can earn the money. You can live your life with your family very happy. It is those kind of, it is those kind of things that every human should do, and we all do. Great ones have done that. If you read from the, folks like Vivekananda, you always say that, the power of concentration is only the key to treasure the house of knowledge. If a student does not focus on her and his journey, the journey is something that gives you a lot of headache, but you don't stop. You keep moving. I just give an example. I went to Vaishno Devi just recently, and I'm watching an 80 years old lady who was literally could not walk. Literally could not, walk, but I saw her courage. I saw her moving slowly, but she was determined to get at the top, to the top. That's a learning from somebody like her. That is called entrepreneurship. You fight for your belief. You go with bang because you believe in it. I have a kind of things that I always believe because I have seen it working. At least in my case, it did work. I didn't have all the resources what I wanted to do, but I did do things that I felt I must do it. My whole idea of talking about this whole thing is to encourage children, students. I'm keep saying students because they are the future. They are the builders of the bridges. They are the builders of the houses. They are the builders of technology that will march on, and we all will relish and cherish. I will conclude very simply saying that, with some of the quote that I always like to, Mahatma Gandhi used to say this, live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Every day God has given to us.
take this journey in his kingdom. Work hard, you know. And again, I will try to tell you a couple of things. Just I took it from you all know, by the way, all these things. I'm not saying anything new. I'm just trying to remind us this is what we should do. You know, when Arjun used to bother Krishna, many times he did bother him. But he made a very profound statement 5,000 years ago, which is still true, and it works. He said to Arjun, look, be steadfast in the performance of your duty. Do not worry about success and failure. Such equanimity is called yoga. Yoga is not just meditating in a room. Yoga is to work yourself into whatever you're doing, indulge yourself, make your life beautiful, do the things that go home, enjoy your family life, and enjoy your family community where you live, love your teacher. I always say that because there is a sense of belief in that belief. There is a sense of belief in that belief because our teachers are your guidance route that they will take you somewhere. Whether you believe in that subject or not, but you never let yourself indulge into an idea that you develop bad feeling about your gurus. They are the best people for you. You spend more time with them than you spend at home. So listen to them carefully. I'm very sure all the professors and teachers dedicate themselves to the very best. So with that talk, I'm going to finish. If you have any question, please go ahead. And I will thank all of you that you gave me an opportunity to come and speak a few things that I have gone through my own experiences. And I say it very honestly that you don't have to reach. You don't have to be rich to be rich. You just have to be very self-aware of yourself. You are a rich person. That is the mantra that should carry on. And I'm sure you will be successful. Thank you very much. Thank you for having me here. Thank you very much, sir. Such an engrossing and enlightening lecture. Very rightfully discussed what it means to be an entrepreneur and what it takes to be an entrepreneur. Talk about great people like Albert Einstein, Steve Jobs, Thomas Edison. Said that we Does anybody have any question, please? receive, sir, students are spellbound and they don't have any questions to ask. Well, it was quite an enlightening and engrossing for you. You try to focus on what it means to be an entrepreneur and what it takes to be an entrepreneur, how one shouldn't limit oneself, that hard work is the key to success, and with whatever resources we have, we must explore it. Communication skills had to have their own importance and must be possessed, and such things you have pointed out which are necessary to become a successful
Thank you, sir, once again for such an enlightening lecture. I'd like to invite now our next speaker. Sir, an assistant professor in the LN Mifta University, Economics. He has, to his credit, many computer skills. He's an expert in such languages such as HTML, and he's well versed with the different operating systems computer. Even before he joined as an assistant professor, he has worked at other places, was a manager, administration, and in charge of MS at ICFAI University, Himachal Pradesh. He served as a faculty at the IBS Business School, ICFAI University, Dehradun, and he was also a visiting faculty at NIIT University, Neemrana, Rajasthan. Sir has conducted many workshops on statistics using SPSS for faculties at both business school. He has also conducted workshops on research methodology for faculties at both business school. Personality development workshops and workshops for non-verbal languages. His areas of interest are business economics and marketing, consumer behavior and consumption pattern, econometrics and statistics, regional inequalities. Sir has, to his credit, many papers published in various research papers, and he has also published many books. He has been an ad hoc reviewer in many journals too. Sir, I would like to invite you to this platform to deliver your lecture. Thank you, madam, for such an introduction. Now, I must say that the way in which you have introduced me, it has I am so glad that you have introduced me with my full CV and all. Today, the skill development and entrepreneurship. This, am I audible to all of you? Hello. Yes, sir. Yes, yes, Okay. Okay. So we will try to make this lecture in Hindi and English both, because I have got the request to have this lecture more in Hindi because of most of our students who have joined the meeting, they can understand Hindi more than English. So there is no problem. We will start in Hindi, and if there is something which I speak in English, you can ask me to translate in Hindi. That's not the problem for me. तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो स्किल है किसी भी व्यक्ति के अंदर में, और एंटरप्रेन्योरशिप है, ये दोनों वर्ड जो है बहुत ही अपने आप में बहुत विस्तृत वर्ड है, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो स्किल डेवलपमेंट में जहाँ तक जो हम ट्रेडिशनल पढ़ाई करते हैं, जो हमारे कॉलेजेज या यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाइयाँ होती हैं, उसमें हम स्किल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जबकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, जहाँ का मेरा एक्सपोजर भी रहा है, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बनिस्बत की ये ट्रेडिशनल जो कोर्सेस हैं उसके। तो हम एक एक करके इन दोनों शब्दों की व्याख्याओं को समझेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि ये कैसे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और कैसे एक दूसरे के पूरक हैं।
तो आप ऐसा समझिए कि आप ऐसा समझिए कि कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई करता है या कोई व्यक्ति अगर कॉलेजेज में या हमारी यूनिवर्सिटीज में एडमिट होता है अपना कैरियर परसू करने के लिए, तो उस व्यक्ति के अंदर में जो जिज्ञासा होती है वो यही होती है कि इस पढ़ाई के बाद हमें कोई जॉब मिल जाए या ऑब्वियसली कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे कि हमारा जीवन यापन अच्छे तरीके से हो सके। तो यहीं पे जो वो स्किल की बात आती है। स्किल में कुछ भी हो सकता है। जो स्किल है वो डिग्री का मोहताज नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जिनके अंदर जिनके पास शायद डिग्री ना हो, लेकिन वो अपने स्किल्स के वजह से अच्छी खासी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। स्किल का कोई भी एक ऐसा गुण आपके अंदर में जिससे कि किसी भी काम को करने में आपकी अलग से एक दक्षता हो, तो ऐसे किसी भी चीज को हम स्किल के अंतर्गत ला सकते हैं। जैसे कि आप छोटे तौर पे लीजिए तो जो आपके ड्राइवर हैं, जो आपकी कार चलाते हैं या आपका जो आपके घर में रहते हैं, तो उसके अंदर में डिग्री है उसके पास या नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है कि वो कैसे जो है इस स्किल को यानी कि ड्राइविंग स्किल उसके पास है। अगर उसके पास डिग्री नहीं भी है तब भी वो अपना जीवन यापन अपने ड्राइविंग स्किल से कर सकता है। इसी प्रकार से जब हम किसी और जो आपका गार्डनर है उसको पता है कि फूल कैसे उगाने हैं, कितने समय तक जो है फूल में पानी देना है, तो ये उसके अंदर का एक स्किल है, जो एक गुण है उसके अंदर का, जो उसको पता है, जो हम और आप नहीं कर सकते हैं वो काम वो करते हैं, और इसके वजह से जो है उनका जो उनकी जो रोजी रोटी है वो बनती है। अब इन स्किल्स का जब आप कॉलेजेज में या जो हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम है, इन सिस्टम में जब आप आते हैं तो फिर ये हमारे अंदर में जो ट्रेडिशनल जो हमारे कोर्सेज चलते हैं, उन कोर्सेज के लिए जो है आपका जो है पढ़ाई आपकी जो जितनी भी तैयारियां होती हैं उसमें हमारे जो बिहार या इंडिया में ही देखेंगे तो हम लोग सिर्फ डिग्री के चक्कर में रह जाते हैं और अपने अंदर कोई एक्स्ट्रा स्किल डेवलप नहीं कर पाते हैं। एक्स्ट्रा स्किल में पढ़ने लिखने वालों के लिए हो जाएगा कि कंप्यूटर में वो कुछ एक्स्ट्रा अपना स्किल डेवलप कर लें, ताकि जॉब ना लगे तो कम से कम वो ओपन मार्केट में जाके अपने अपना व्यवसाय या अपना कुछ ढंग का कर सके। तो ये चीजें हैं जिसको होना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट के अंदर में होना चाहिए ये चीज कि आप स्किल के लिए कैसे जो है अपना डेवलपमेंट उससे करते हैं। अब स्किल के साथ साथ यहाँ पे आज के टॉपिक में जो है कैसे उसको एंटरप्रेन्योरशिप में डेवलप किया जाए। तो एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य होती है कि जो स्किल्ड व्यक्ति है वो उद्यमी भी होगा तो वो अच्छा उद्यमी होगा, क्योंकि कोई भी व्यवसाय जब आप करना शुरू करते हैं तो उस व्यवसाय को पहले आपको खुद करना, उसकी जो बारीकियां हैं ये आपको खुद समझ में आनी चाहिए। एक बार जब आपको आपकी बारीकियां समझ में आने लगेंगी तभी जाके आपका जो व्यवसाय है वो सफल हो पाएगा अच्छी तरीके से। उद्यमी का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने अपने लिए कोई उद्यम की स्थापना करता है और जो दूसरे के यहाँ रोजगार मांगने के बजाय अपने यहाँ लोगों को रोजगार देता है, उसको हम लोग उद्यमी कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हो गया उद्यमिता, यानी कि व्यक्ति के अंदर पाया जाने वाला ऐसा गुण जिससे कि वो आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय करके इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके या अपने समाज को आगे बढ़ा सके, खुद के लिए भी दो रोटी कमा सके और आप अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी कुछ दे सके। आप मेरे से पहले जो स्पीकर ने बताया स्टीव जॉब्स का नाम लिया, उनके अंदर में उद्यमिता थी।
उन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप अभी तो मुकेश अंबानी है, धीरू भाई अंबानी की अगर बात करें तो धीरू भाई अंबानी के अंदर में उद्यमिता थी और उन्होंने एक ऐसे रिलायंस इंडस्ट्री का स्थापना किया और उसको चलाया, जिससे कि आज हजारों और हजार की संख्या में लोगों को रोजगार मिलते जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको देखनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, तभी जाके जो है आपकी जो पढ़ाई है वो पूरी हो पाएगी। इसमें आप किसी भी क्षेत्र से उदाहरण ले सकते हैं। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप साथ साथ में कोशिश कीजिए कि ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अपनी उद्यमिता के बल पर कुछ काम किया है या आगे बढ़ने की कोशिश करी है, उन लोगों को, उनकी जीवनी को आप पढ़िए और समझिए। आज जो हमारी सरकार है उसने मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट को दिया है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से फंड दिया जा रहा है। तो ऐसे मेड इन इंडिया का जो स्कीम है या उसके लिए जो अलग से फंड दिए जा रहे हैं, इनकी जो उपयोगिता है उस उपयोगिता को हम अगर अपने में कोशिश करें कि इसको हम अपने लिए उपयोगी बनाएं, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो समाज पर एक अतिरिक्त बोझ है कि जो नौकरी करनी है या नौकरी के लिए ही हमें जाना है, तो वो बोझ खत्म होगा। तो छोटे छोटे ये उद्यमिता का जो लेवल है वो किसी भी स्केल में हो सकता है। वो नीचे के स्केल से हो सकता है, ऊपर के स्केल से हो सकता है। आप अगर देखेंगे तो जो सामान्य तौर पे जो छोटा बिजनेस है, कोई कारपेंटर है या इस तरह से कोई ब्लैक स्मिथ है, तो उसको भी उसके अंदर में एक स्किल है। तो पहले कोशिश ये, या अभी भी कोशिश ये की जाती है कि जो अपने बच्चे हैं उनके अंदर में वह वो स्किल जरूर चली जाए जो कम से कम उसके फादर जिस स्किल से घर को चलाते हैं। अब धीरे धीरे करके जो हमारा रुझान है, खासकर बिहार में अगर आप देखेंगे तो जो प्राइवेट नौकरी है उसके प्रति रुझान हमारा कम है। हम हमारे जितने ही बच्चे हैं, समाज एक्सपेक्ट करता है कि नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी होना चाहिए। ऐसी बात कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी होना चाहिए। आप जो है अगर अपने स्तर पर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे समाज में आपको उदाहरण मिल जाएंगे जिनके पास सरकारी नौकरी न होने के बावजूद भी वो अपनी जिंदगी को अच्छे से निभा रहे हैं या जी रहे हैं। तो वो उद्यमिता का एक उदाहरण है कि कैसे हम एक उद्यमी बने, और उस उद्यमी बनने के लिए स्किल का एक बहुत बड़ा योगदान है आपके अंदर में। अभी एक्चुअली क्या हुआ कि मैं अपना स्लाइड्स वगैरह नहीं ले पाया, लैपटॉप थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से, नहीं तो पूरा मैं स्लाइड में उसको दिखाता आप लोगों को कैसे कैसे करके जो है एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। खैर कोई बात नहीं है, हम लोग ऐसे ही अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अंदर में जितनी ही बातें आ सके वो कर सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, जिसमें छोटे स्तर के जो बुनकर हैं, जो विश्वकर्मा समाज के हैं, अभी प्रधानमंत्री ने जो आचार संहिता लगी उससे पहले घोषणा करी थी कि उनको कुछ लोन दिया जाएगा। शुरुआती दौर में 50,000 से शुरू होगा, अगर वो उसको वापस कर देते हैं तो फिर 1 लाख का लोन उनको मिलेगा। इस तरह से ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और अपनी जो बातें हैं अपने समाज में जो है वो अपने स्तर से वो उसको निभा सके। तो ऐसे उद्यमी जो हैं वो हमारे समाज में है, और सरकार की कोशिश है या आप लोग को भी कोशिश करना चाहिए कि जो नौकरी ढूंढने वाला नहीं बन के हमको नौकरी देने वाला बनना है। तो नौकरी देने वाला बनने के लिए वो यही बात आती है कि पहला तो ये है कि आपके अंदर में स्किल होना चाहिए किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए। और दूसरा ये है कि उद्यमिता का जो स्तर है, जैसे कि इकोनॉमिक्स में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो इकोनॉमिक्स में 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। अगर किसी के पास लैंड है, कैपिटल भी है, लेकिन उसके अंदर में अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल नहीं है तो फिर वो सब उसके लिए किसी काम का नहीं।
और जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, जिसके अंदर में उद्यमिता का स्किल है, वो चाहे तो अपने, अगर वो आगे बढ़ना चाहे तो वो बाकी जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं, उन सारे फैक्टर प्रोडक्शन का व्यवस्था कर सकता है। जैसे कि कैपिटल है, कैपिटल के लिए वो लोन ले सकता है। अगर लैंड उसको चाहिए तो लैंड वो रेंट पे ले सकता है, लीज पे ले सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन वो अपने स्तर से सेटअप कर सकता है, लेबर वो हायर कर सकता है। और इस तरह से अगर उसके अंदर में ये स्किल है कि एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल उसके अंदर में है, तो वो पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन सकता है। और ऐसे बहुत सारे मिसाल आपको समाज में मिल भी जाएंगे। कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करें तो उसमें से जिसके पास एंटरप्रेन्योरशिप का जो है, अब उद्यमी जब बनना है तो उद्यमी के लिए होता ही है कि आपको जो जितने ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो एक तरह से सेफ होते हैं। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में है या लेबर है तो उसको वेज मिलना तय है, ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन जो उद्यमी है उसको रिस्क लेना पड़ता है। तो उद्यमिता का ही एक उसके अंदर में जो आवेश है, उसके लिए उसको ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर में रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। रिस्क लेने का तात्पर्य यहाँ पे है कि अगर उद्यमी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, या स्टार्टअप, मान लीजिए गवर्नमेंट के स्टार्टअप योजना का से के द्वारा ही वो बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसमें रिस्क ये होता है कि वो बिजनेस चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। तो वहां पे उसको जो है ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो है वो अपने अंदर में को मजबूत करे कि वो अपने अंदर से रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है उसको वो आगे तक ले जा सके। अगर बीच में आप लोग का कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का इंटरेक्टिव सेशन है, चलते रहेगा। अगर आप में से किसी के मन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हैं। खैर, अब स्किल के लिए क्या होता है कि दो तरह का आप कह सकते हैं उद्यमिता और स्किल में। एक तो जो देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जन्मजात उनके अंदर में रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है, जिसको वो उनका नेचर ही ऐसा होता है कि नौकरी नहीं करनी है, बिजनेस करना है। ये जो बिजनेस करना है, ये जो मानसिकता है, यही मानसिकता जो है आपके अंदर में उद्यमिता को लाता है, ताकि आप ताकि आप उद्यमी बने और उद्यमी अपनी उद्यमिता से जो है आप आगे बढ़ने का कोशिश करें। तो इस प्रकार से जो है आपको दूसरा जो उद्यमिता है वो है कि आपको स्किल डेवलपमेंट के द्वारा सिखाया जा सकता है कि आप विभिन्न तरह के प्रोग्राम में आप भाग ले सकते हैं, और उन प्रोग्राम के माध्यम से आपके अंदर में इसको एंटरप्रेन्योरशिप को नर्चर किया जा सकता है। तो ऐसे जो स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। आप किसी भी अगर ऐसे प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं तो आप उस प्रोग्राम को भाग लेके आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से जो है हम पहले, मान लीजिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, उसके साथ साथ आपने कंप्यूटर में कुछ एक्स्ट्रा कर लिया, या आप अपने अंदर में कुछ जो है वो टेक्निकल अलग से कुछ कर लिया। जो आजकल मैट्रिक के बाद जो है आपका आईटीआई के अंतर्गत आप एडमिशन जब लेते हैं तो बहुत तरह के स्किल्स होते हैं जिसको आप वहाँ पे आईटीआई कॉलेजेस में सीख सकते हैं। और सीखने के बाद जो है आप उन स्किल्स का यूज करके खुद का व्यवसाय कर सकते हैं। अब यहीं पे आता है उद्यमिता का सवाल। स्किल अगर आपके अंदर में हो भी गया तो फिर उसके अंदर में आता है कि उद्यमिता को कैसे जो है वो बढ़ाया जाए। तो जैसा कि मैंने कहा कि उद्यमिता एक जन्मजात ही होती है कि किसी व्यक्ति के अंदर में रिस्क लेने की कैपेसिटी है, और एक होता है कि उसको अपने नर्चर करके जैसे जैसे समय बीतेगा उसके साथ साथ उसके अंदर में अगर स्किल्स डेवलपमेंट होते हैं तो फिर वो कोई स्टार्टअप लगा सकता है और उद्यमिता वहां से भी शुरू की जा सकती है। तो उद्यमिता दो प्रकार की मोटा मोटी होती है। एक तो ये होती है कि जन्मजात है, उसके अंदर में शुरू से या उसका फैमिली बिजनेस शुरू से है, तो उस अपने बिजनेस में रहता है, सीखता है और फिर उसी बिजनेस को आगे बढ़ाता है। दूसरी जो उद्यमिता होती है वो आप सीख सकते हैं।
आपके अंदर में धीरे धीरे करके उस गुण को नर्चर किया जाता है, ताकि आपका जो है वो एक तरह से व्यवहार में परिवर्तन हो और आपके अंदर में साहस, एक साहसी की भावना जगे, साहस का भावना जगे, और आप जो है वो उस चीज को आगे बढ़ा के जो है एक उद्यमी के तौर पर समाज में अपनी पहचान बनाए। तो ये दोनों बातें हैं, आप सीख भी सकते हैं, आपके अंदर में जन्मजात भी होती है। और ये जो फोकस है अभी वो यही पे है फोकस, कि किस तरह से जो है जॉब सीकर्स के बदला में जॉब गिवर्स बने। जब आप जॉब गिवर्स बनते हैं, यानी कि आप एक उद्यमी बनते हैं, तो वही जो एक बात मैंने बताई कि बाकी सबका जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका एक रिवार्ड तय होता है, लेकिन जो उद्यमी है उसका रिवार्ड लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। खास करके शॉर्ट रन में उसको दोनों लाभ या हानि दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब उसको ये है उसके अंदर में कि वो उस हानि अगर होती है तो उससे अपने आप को उबारे और आगे चल के ये देखें कि किस प्रकार से जो है वो अपना स्किल बढ़ा सकता है। तो अगर वो कोई बिजनेस शुरू करे और उस बिजनेस में पहले ही टर्म में या पहले क्वार्टर में मान लीजिए उसको लॉस लग जाता है, तो जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन बोलते हैं, तो अगर शॉर्ट रन में आपको अगर कोई किसी प्रकार की हानि को का सामना करना पड़ता है, तो जो एक साहसी है वो वहां पे हार नहीं मानता है। वो क्या करता है कि फिर उसको लॉन्ग टर्म में ले जाने की कोशिश करता है, और लॉन्ग टर्म में ले जाके फिर उसको कोशिश करता है कि किस प्रकार से जो है वो इस उद्यमिता को जो है वो आगे बढ़ाए। अगर वो पहले ही प्रयास में अगर वो हानि के वजह से शॉर्ट रन में ही अपना बिजनेस छोड़ देगा, तो फिर उसके आगे बढ़ने की संभावना जो है वो बहुत कम हो जाएगी। तो जैसा परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में हम लोग देखते हैं, या किसी भी मार्केट में शॉर्ट रन में लाभ या हानि दोनों हो सकता है किसी को भी। और लॉन्ग रन में जब हम जाते हैं तो लॉन्ग रन में हम ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से सामान्य लाभ, कम से कम अगर परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट है तो सामान्य लाभ जरूर हो। और वहां पे जो है अगर सामान्य लाभ नहीं होता है, अगर सामान्य लाभ नहीं होता है तो फिर उसका लॉन्ग टर्म में जो है वो उसका बिजनेस बंद हो सकता है। और अगर परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट नहीं, जो प्योर मोनोपोली या ओलिगोपोली मार्केट है, तो वहां पे वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात सोचता है। अब यहाँ पे एक अंतर आप लोगों को मैं समझाते चलता हूँ कि नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। जैसा आप लोगों ने किताब में भी पढ़ा होगा कि जैसा मैंने बताया कि 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर। तो इसमें से जो है अगर हर किसी को उसके हिस्से का मिले, जैसे कि लैंड को रेंट मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी मिलती है, लेबर को वेज मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, और उद्यमी को लॉन्ग रन में प्रॉफिट मिलता है, तो उसको, उस प्रॉफिट को हम लोग जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिवार्ड के रूप में आते हैं, उस प्रॉफिट को हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। ये नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में होता एक्सक्यूज मी सर। है। हाँ बोलिए। सर आप बोले कि लॉन्ग मतलब शॉर्ट रन में अगर प्रॉफिट नहीं मिले तो लॉन्ग रन का वेट करना चाहिए, उसमें प्रॉफिट होगा। और अगर लॉन्ग रन में प्रॉफिट नहीं हुआ तो मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो तो लोन में रहते हैं पूरे। क्योंकि आज के बिजनेस में आपको विदाउट लोन या विदाउट आप उसमें इन्वेस्ट किए हुए आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये इकोनॉमिक्स का जो रूल है वो मैंने आपको बताया कि लॉन्ग रन में कंपनी बंद हो सकती है, शॉर्ट रन में उसको तीनों जो लाभ, हानि या सामान्य प्रॉफिट की जो बात हम कर रहे हैं वो करते हैं। और जो आपने सुसाइड अटेम्प्ट करने की बात बताई, यही तो है जो साहसी के अंदर में, जो एंटरप्रेन्योरशिप जिसके अंदर में वो गुण है उसमें, और आम आदमी नहीं है। एंटरप्रेन्योर बनना हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। और सुसाइड सर अटेम्प्ट करना। लेकिन हाँ सर बोलिए। लेकिन वो प्रॉफिट के लिए ही लॉन्ग रन में जाता है कि हमको शॉर्ट रन में तो प्रॉफिट नहीं हुआ, इन केस इन फ्यूचर में को हो हाँ हाँ हाँ। तो लेकिन इसी के कारण वो उसमें जाता है। लेकिन उसके पास तो अब ना लोन पेमेंट करने के लिए कुछ बचता है ना आगे, क्योंकि वो सारा तो अपने बिजनेस में लगा दिया। नहीं नहीं, तो यही है ना कि ये जो स्किल मैं जिस पर बात कर रहा हूँ, ये हर की रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए।
ये हर किसी के अंदर में नहीं होती है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि उसके अंदर में रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, तो वो फिर किसी दूसरे जगह पे नौकरी करेगा, जैसे हम और आप हैं। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर बट सिर्फ रिस्क से नहीं होता ना, पूरा टीम चाहिए होता है रेवेन्यू संभालने के लिए, बिजनेस संभालने के लिए, जो भी मार्केट प्लेसेस होते हैं उसके लिए। तो सिर्फ पैसे से नहीं होता है, टीम की जरूरत होती है, और टीम के लिए पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो इसके लिए आप कुछ टिप्स दे सकते हैं? हाँ हाँ, तो वही तो मैं आपको पहले अभी मैंने बोला है, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं, कि जो 5 फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन होते हैं उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन जिसको सैलरी देता है उद्यमी, तो ये सारे वही तो वो अपना टीम बनाता है ना। जो मैंने आपको कहा कि जो उद्यमी है वो अपना टीम बनाता है, और उद्यमी जो है वो पूंजी को या तो अगर उसके पास खुद की पूंजी है तो अपनी पूंजी लगाता है, अन्यथा वो लोन पे लेता है। तो अब उस पूंजी को लगाने के बाद, यही मैंने आपको कहा ना कि जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं। उनको उनका जो बीच में जो है क्या कह सकते हैं कि कोई उनको रोकता नहीं। जो ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी मिलेगी ही, वेज मिलेगा ही, रेंट मिलेगा ही, इंटरेस्ट मिलेगा ही। जो उद्यमी है उसी को तो रिस्क लेना होता है। यही तो उद्यमिता का पर्यायवाची है कि रिस्क आपको लेना पड़ेगा। आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर आप सिर्फ ये सोच के चलिएगा बिजनेस करने की हमको प्रॉफिट ही होना है, तो ये संभव नहीं है। और जो मैंने आपकी बात पहले कही कि समाज में जो है ये उद्यमिता हर किसी के अंदर में नहीं आती है, वो उसी के अंदर में I think there is some technical glitch and sir has left the video or is not visible in the participants gallery. So we'll wait for 2 to 3 minutes. Maybe there is some network connection and then we'll wait for sir to rejoin. Kindly maintain patience. And please, dear students, if you have to, or the scholars who are here, if you have to ask any questions, ask in the chat box. Okay. Don't just start rebutting the guest. Okay. If you have any questions, mention it in the chat box and then we will take up your questions after the end of the lecture. Okay. We'll see. We'll wait for 1 or 2 minutes. Let's see if sir can rejoin. No,
मुकुंद सर फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर प्लीज कंटिन्यू। Sir, you are not audible. हेलो। यस Sir, सर, अब यस सर, बोलेगा सर। okay, audible. हाँ, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक। वो एक्चुअली पता नहीं अपने आप से वो कट गया था। तो हम जो बात आप लोग के साथ कर रहे थे कि जो एंटरप्रेन्योर है वो उद्यमी जिसको कहते हैं, उसमें ये क्षमता होनी चाहिए कि वो अगर हानि होता है तो भी उस चीज को बर्दाश्त कर सके। अगर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो वो एंटरप्रेन्योर बनेगा ही नहीं। और इकोनॉमिक्स में जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, जो डिफरेंट मार्केट कंडीशंस होते हैं, तो अलग अलग मार्केट कंपटीशन, जो खास करके जो ओलिगोपोली मार्केट है, जो कि रियल मार्केट कंडीशन होता है किसी भी देश या किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, तो वहां भी आपको शॉर्ट रन में लॉस हो सकता है। सामान्य प्रॉफिट हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, और लॉस हो सकता है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो जो नॉर्मल प्रॉफिट है, यानी कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में जो उसको प्रॉफिट मिलता है, अगर उससे भी ज्यादा प्रॉफिट उसको मिल रहा है तो उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या इवन की नॉर्मल प्रॉफिट उसको हमेशा मिलता ही रहे। उसको हो सकता है बहुत सारी कंपनियां जो है वो बंद हो जाती हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनियां जो है बंद हो जाती हैं। दिक्कत क्या है ना कि हम लोग खास करके जितने भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम लोग जानते हैं उसी के बारे में है जो सफल होता है। अगर उस 100 लोग अगर बिजनेस को स्टार्ट किया और उसमें से एक लोग सफल हुआ, तो हम लोग के जुबान पे उस एक लोग के बारे में ही हमें पता चल पाता है, उसी का नाम रहता है जुबान पे। और जो 99 लोग असफल हुए उसको कोई नहीं जानता है। तो ऐसा नहीं है कि जो जैसे आप एक उदाहरण ले लेते हैं धीरू भाई अंबानी का, क्योंकि उनके बेटों को तो उनका बना बनाया साम्राज्य मिला है, लेकिन उन्होंने बहुत ही सामान्य स्तर से शुरुआत करी थी। लेकिन एक धीरू भाई अंबानी को हम सब लोग जानते हैं, पूरा इंडिया जानता है, इवन की पूरा वर्ल्ड जानता है। लेकिन वैसा बनने की कोशिश जो है बहुत सारे लोगों ने की होगी कि हम भी अपना कोई बिजनेस डालें, हम भी आगे बढ़े, लेकिन उन लोगों को हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक यही चीज जो है देश के स्तर पे सोचिए या समाज के स्तर पे सोचिएगा, तो जो असफल होता है उसको कोई जानता ही नहीं। खास करके जो बिजनेस एनवायरनमेंट है हमारे देश का, या कहीं का भी, हमारे देश की उसमें बात नहीं है, किसी भी देश का भी जो उद्यमी होता है उसको रिस्क लेना ही पड़ता है। और रिस्क में प्रॉफिट और लॉस दोनों आता है। जब तक वो लॉस के लिए तैयार नहीं होगा वो उद्यमी हो ही नहीं सकता है। तो ये मैं समझाना चाह रहा था कि इसी को हम लोग मार्केट में भी स्टडी करते हैं। फिर आगे चल के आप देखिए कि जो उद्यमी है वो बहुत सारे उनके उनके पास बाधाएं आती हैं। आप लोग को इकोनॉमिक्स में ही पढ़ना है, और वैसे ही मैं बता दूं कि एक उद्यम को शुरू करने के लिए पूंजी, जो मैंने बताया, लैंड लेबर कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो है ही। उसके बाद सरकार के विभिन्न विभाग हैं जिससे आपको क्लियरेंस लेना पड़ता है। जैसे एनवायरमेंट है, तो आप एनवायरमेंट का जो मंत्रालय है वहाँ, या उसका जो ऑफिस है, दफ्तर है, वहां से आपको उसके लिए क्लियरेंस लेना पड़ेगा। अगर आप क्लियरेंस नहीं लेते हैं तो फिर आपकी जो कंपनी है उसके ऊपर चार्ज लग सकता है। तो ऐसे बहुत सारे इम्पेडिमेंट्स होते हैं जो आपको बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू फेस देम। And if someone is not willing to face these impediments, then he or she has no right to start up the business or to become the entrepreneur. मैंने कहा था कि जन्मजात ही किसी किसी के अंदर में ये गुण होता है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमी बनना चाहता है।
और कुछ लोग जो होते हैं वो स्किल अपने अंदर में डेवलप करते हैं और फिर उस स्किल के माध्यम से वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जितने व्यक्ति के अंदर में कुछ स्किल है वो सब एंटरप्रेन्योर ही बन जाए। कंप्यूटर सीख के जरूरी नहीं है कि हर कोई जो है वो कोई उद्यमी बन जाए, उस वो कहीं काम भी कर सकता है। तो समाज के अंदर एक विस्तृत जो है आपके अलग अलग जगहों से या समाज के विभिन्न भागों से लोग आते हैं और उन लोगों को समझना पड़ता है कि कौन सा जो है वो किसी के अंदर में काम करना चाहता है या कौन सा है जो बिजनेस संभालना चाहता है। तो खास करके मोटा मोटी ये बातें थी। संजोग से मेरे पास स्लाइड्स नहीं है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए, नहीं तो मैं अब कंक्लूड कर दूंगा इस चीज को। हेलो। एक मिनट सर, so many questions are there. सर आपका सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप के क्या फायदे हैं, क्या उसके क्वालिटीज है, क्या लक्षण है, सारी बातों को विस्तृत रूप से चर्चा की। और थैंक यू। जिसकी वजह से सर बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो कि आपसे क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं। सर जैसे मुस्कान कुमारी है, हमारे कॉलेज की स्टूडेंट है। हाउ टू डेवलप ए गुड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल विदाउट स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी ऑन सोशल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इफ यू वांट टू क्रिएट ए गुड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मुस्कान नाम है ना? जी तो जी। you have to invest money in today's scenario. You have to go for the advertisement. There is no other way around. You have to understand people, and you have to find some space on social media or this newspapers or somewhere you have to find the space. वन मोर थिंग इज देयर कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डेवलप करने हैं तो जो जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आपने समाज में सुना होगा, जैसे एमवे वगैरह के लोग करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, तो वो एक तरीका है अपना चैनल डेवलप करने का। उसके अलावा आपको जो है डेवलप करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि कैसे आप, क्योंकि जब तक लोग आपके बारे में जानेंगे नहीं, आपसे कोई जुड़ेगा नहीं। तो लोगों को किसी न किसी तरह से आपके प्रेजेंस का पता होना चाहिए। और कैसे उस प्रेजेंस का पता लगाना है, ये तो आपको देखना पड़ेगा कम से कम। थैंक यू सर। सर आपने बहुत सही बोला कि हमें बहुत सारी चीजों को इसमें सीखना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ आजकल सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इनके थ्रू भी हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन अपना चैनल लेकर क्रिएट कर सकते हैं और उसके थ्रू बिना कोई पैसा खर्च किए हुए भी हम आगे बढ़ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर एक क्वेश्चन है अंजलि कश्यप जी का। प्लीज टेल अस अबाउट प्लेटफॉर्म विच हेल्प अस डेवलप सच स्किल रिलेटेड कैरियर अपॉर्चुनिटीज। सर साउंड यू आर नॉट ऑडिबल। सर आप जुड़ गए क्या? हेलो मुकुल सर। मुकुल सर।
Hello. Hello. I assume that there is a technical glitch, and so Nitin sir is not able to connect with us. And there are some questions which had been raised, like how can we reduce the risk in startups? That is taken. The question is taken up by Assistant Professor Purnima from the KM. And then there are certain other questions from Anjali Kashyap. There is a question like what are the platforms which can help us develop such skill-related career opportunities? Now, for these two questions, I think the apt person to answer this question is our last speaker, who is a master trainer and in the government of Bihar, and he actually trains the people for entrepreneurship. So he will give you all these technical details of how can you start a startup or an entrepreneurship if you want to start a small, cottage industry or all such things, and what are the skills required for it. So these questions, I think, we'll take up at the end of the session. And by that, one more question we have by Ravi Dev, that how do entrepreneurs commit suicide and how can it be prevented? Now, for this question, I think sir has already answered this question before, because earlier also there was one question by Haripriya. She was asking what can be the things where suicide attempts can be prevented. Now, see, I'm not an economist, but what I can say or what sir already said is that yes, if you are starting up any venture, you have to be prepared for all the odds. And of course, there are skills which needs to be honed, which needs to be developed. And as I said, our last speaker will be giving you all the technical details on that. But apart from that, yes, you have to be brave enough to face whatever challenges and difficulties are coming your way. So yes, it is not an easy task to be an entrepreneur. You have to go through all the parts. And with this, I think Mukund sir is not able to join us anymore. So we'll move on to our next speaker. And from here, I'll hand over the mic to our anchor for today, Dr. Lalit Prabhu. Please, ma'am. Thank you, Vinitha ma'am. Moving on, our seminar, I would like to invite our next reverend speaker, Professor Dr. Madhushali, who is a professor at the University Department of English here at Bihar University, Muzaffarpur. She has an amiable personality and she is highly revered by all. The areas of interest are literary and critical theories, and she has to her credit the publication of a number of articles on various topics. She has presented innumerable papers in national and international seminars and conferences, and she has been instrumental in supervising multiple research works. I would like to invite ma'am to share her ideas on how to cultivate new skills and skills so that they can empower themselves with creative thinking and foster their entrepreneurial skills and translate them into informed. Ma'am, please. सर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं
Pam will be joining us shortly. That's your passion, patience. I am sure you're going to have a very enlightening lecture by ma'am, senior professor, and well loved and much dear to all of us. Okay. आवाज नहीं आ रही है मैम। अभी मैम जुड़ रही है, so please have patience.
Ma'am is present here. Welcome, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am. Videos Okay now? Okay. You are audible. There is a video. Okay. Okay. Good afternoon, everyone. Ma'am, you are not audible. प्रश्न 1 में डी, प्रश्न 2 में बी, डी 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 फॉर बॉय, 3 में सी फॉर कैट, 4 में डी फॉर डॉग। अभिमन्यु सर, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कीजिए। 9 में डी फॉर बॉय, 7 में ए फॉर एप्पल, 8 में ए फॉर एप्पल, 9 में अभिमन्यु सर, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कीजिए। ए फॉर एप्पल, 11 में डी फॉर बॉय, 12 में ए फॉर एप्पल, 13 में बी फॉर बॉय,
14 में G for boy, 15 में P for cat. घुसा हाथ घुसा के मतलब गिर You're audible. You're audible. Yes, ma'am, you're audible. Yes, ma'am, you're audible, audible. No, ma'am, you are audible. I think there is some technical problem. For some people, it is not audible, but for us, we can listen to you very clearly. And then again, one thing is that sometimes earphone is also not working. So from our end also, some people are unable to hear who are using earplugs. So if you are using an earplug, I will ask all the participants to just uh, leave your earphones and try listening without your earphones. It is audible.
And this involves, yes, Vinamrita, this betterment of his self involves recognition, adoption, and enhancement of his skills, both on personal as well as professional fronts. In turn, these involve the key terms of the thrust area of today's seminar. Here, I'll quote Jim Rohn, the American entrepreneur and the author, who says, I quote, "Set a goal to become a millionaire for what it makes of you to achieve it." And the second part is more important. Do it for the skills you have to learn and the person you have to become. Close quotes. Now, in today's world of technological progress, a man's success is generally attributed to his technical knowledge, with little or no attention to his communication skills. But a study undertaken by the professors at Harvard University, it was a research study, states that 85% of professional success comes from well-developed soft communication skills, personality traits, and only 15% from technical skills or knowledge or hard skill. So in today's address, I will focus on these aspects, the soft skills. We will explore how good communicative skills and personality development can positively shape our personal and professional growth. Now, this in turn brings us to man's ability or his nature as being social, highly social, and interdependent nature. This resulted in the basic urge to express and share one's feelings, thoughts, ideas, emotions, views. And this in turn germinated in the act of communication. The ability to communicate in multifarious ways is the fundamental factor that differentiates human beings from other animals. Furthermore, the ability to communicate well distinguishes one individual from another of his species. See, actually, as I'm talking to you all, I'm indulging in the act of communication itself. In fact, in our process of evolution, that is human evolution, we have become compulsive communicators. And you can very well understand this point when you see the cell phone usage all around, as well as all the content that is being shared on the social media via Facebook, Twitter, blogs. I don't know, many you all are better versed in this. Being a student of literature, I'll trace the root of the word communicate. So etymologically, the word communication is derived from the Latin word communicare, which means, I quote, to impart, to participate, to share, or to make common. According to Webster's dictionary, communication is, I quote, sending, giving, exchanging information and ideas. So as individuals, we tend to give and exchange information. Sometimes we are not even conscious about it, because communication does not always involve language, and neither does it always need the help of words. Very often, our behavioral attitude or body language, as you call it, conveys messages. You have people who have speech or listening disability.
They take recourse to sign language. Even small babies, when they have not learned to speak, just babbling, even before that, hunger, pain, or any discomfort by crying. So communication is not always just about talking. It also includes the way we build relationships, make choices in life, and get things done. In the present world scenario, where change is so fast paced, all of us have felt one time or the other the need of good communication skills, because for students this need becomes imperative. You see, they have to face or meet the challenges of today for a better tomorrow. Now, this knowing from where this word has evolved, let us see what is the process of communication. The process of communication involves a few elements, like a sender, the one who sends the message, a receiver, the person who receives it, a message, and also a channel or a medium. So the sender encodes a message through a proper channel, say the telephone or the mobile or SMS, whatever the medium. And the receiver, when he gets it, he decodes it. And after interoperating it, he sends a feedback, what he thinks about it, to the sender. And thus this process of communication continues. So far as the types of communication are concerned, generally they are considered to be of two types, verbal and non-verbal. Now, verbal, again, split into two, oral communication and written communication. So when words or language is used to communicate the intended meaning to the other party, or that is the receiver, then it is an instance or an example of verbal communication. Now, coming to oral, as the name is suggestive, it is through speech or spoken communication when two people stand face to face, or through video conferencing, or even when you talk over a phone or mobile sets. So it involves speaking, listening, writing, and reading. The second is written communication. It is very obvious that it invokes the use of letters or emails or documents, SMS, social media to interact with people. Another type of communication is the non-verbal one. Now, this is wordless communication because words are not used. Instead, you have to rely on signs, symbols, for example, your facial expression, the body language, the gestures, the nod of the head, eye movement, eye contact, and the posture of the person. You'll be surprised, that 93% of communication is non-verbal. Only 7% is through words. And out of this 93%, 55% is done through your gestures or facial expression or posture, and 38% through the voice, your tonal variation. Even among this, the non-verbal communication, there are a number of types, like say the kinesics, first one, that is communication through body language, your facial expression, eye contact, the gesture, the posture. Then the second one is artifacts, when you learn how the appearance of a person speaks a lot about his or her personality, and that is the way to convey the way the person is dressed or the accessories which the person is carrying. Everything speaks. You are not aware, but what you carry, what you wear, everything conveys something about you. Then the next is proxemics. This is the distance maintained by a person while communicating with others.
it tells a lot about the relationship shared between them. And then is the chronemics, which is the use of time in communication. How much time, how punctual or disciplined a person you are. It tells a lot about you. And the last one is the vocalics, that is the volume, the tone of voice and pitch, which is used by the sender to transmit information, that is called vocalic. So imagine a lot of the things are happening unconsciously or maybe semi-consciously when you dress up and all that is semi-conscious. So words are not used, yet another person, the other persons with whom you are going to communicate, they judge you. You speak, your appearance speaks to them. There are advantages to both these types of verbal and non-verbal communication. For example, I'll cite the transmission of message in the verbal communication is fast and the feedback also is instant. In the non-verbal communication, because it relies on the understanding of the receiver, so it may take time. As a result, in the verbal communication, there is very little chance of confusion between the sender and the receiver. But the chances of confusion and misunderstanding in non-verbal communication, it's relatively high. You start reading the expression, oh, she looked at me when she was speaking and her eyes, she had stern eyes. She looked at me with stern eyes. Or the expression, oh, she said this, but the smack on her face spoke of something else. It said something else. So confusion can arise. Then in the verbal communication, the presence of both parties at the same place, that is the sender and the receiver, is a must. It's not necessary. But in non-verbal, it's a must. That is face to face, so they have to be at the same place. Then in verbal communication, messages can be understood clearly and the feedback is instant, as happens in the case of a teacher who's in a classroom. The effect of the speech or the lecture on the students can be gauged by the teacher, and adjustments in the tenor of the communication can also be molded. But non-verbal communication, they are complementary in nature, and so they complement verbal communication. When you're speaking, the non-verbal features, they help to convey what you intend to speak. So both these have their own advantages and disadvantages. I've seen how the process of communication continues. Now let's see what are the advantages of communication skills. Because ultimately this is what of session is the communication skills, because it is an important skill. And ultimately, if you are thinking of your future, of a bright future, these will help you in achieving what you want to do in life. So the first important point when we talk about the importance of communication is that it is visible in the personal relationships which you foster between two people. If you express your thoughts, you share your experiences, listen actively to other people, all these are methods in the process of communication. So when you do all this, ultimately it will help you in growing as a person, both on the personal and professional front. It also helps you to create an understanding and trust with other people. Your professional success also can be influenced by communication skills, because ultimately the way you convey your ideas clearly, the clarity of your thought, and the way you collaborate with other people in an effective manner, it will help you in your professional growth. Your individual performance will be enhanced. It will
give a stimulus to your leadership qualities, and ultimately the teamwork and career advancement will be aided with the way you communicate with the other team members. And remember that the employers always keep this quality, the quality of effective communicative skills, at the top of the qualities, the list of qualities that they are looking for when they move for the new hire. The third benefit of communication is on problem solving and also decision making. Same if you are open in your thoughts, clear in conveying what you think about a situation, then you have a better perspective, you have a better insight, you share your views with your team members. So you have a very well-informed problem-solving approach to any given situation. You know that others also have gone through it. Because you share with them your problems, you have an idea how to overcome that problem. The next is that good communication skill helps to build your confidence, which is reflected in forging new relationships, personal interactions, and professional presentations. Of course, also engaging in the public speaking when you are making a public appearance. Communicative ability helps in expressing your emotions. Again, as I said, this aspect is generally ruled down, but a person who's successful today, people generally vouch for or generally talk about his IQ. But remember, the balancing of IQ with the EQ, that is the emotional quotient, is equally important. So when you express your emotions, it fosters a very strong bond, establishes a personal relationship, and nurtures empathy. And that is a very important quality in any entrepreneur or any person. In the workplace, the skill with which you navigate and the skill with which you communicate your emotions, it contributes to a positive and collaborative work environment. And naturally, it will be seen on the material side also. And finally, leadership qualities. Leadership and effective communication, in fact, they go hand in hand. They are like twins. They are like conjoined twins. Entrepreneurs who can communicate their views, their vision clearly, inspire their team, and moving in the right direction, they achieve success. So it acts as a cornerstone of leadership. It influences team dynamics, organizational culture, and overall success of the team and also the entrepreneur. So you see, the effective communication is more than a mere skill to be mastered. It's a fundamental feature, an important aspect of personal and professional growth. There was a book written by two professors from the University of Wisconsin, Professors Scott Cutlip and Alan Center, who published this book, a seminal book, Effective Public Relations, and they cited 7 C's of communication. I won't discuss the details, but because the qualities themselves speak for themselves. First one is clarity. Whatever message you have to convey, it should be. And I'm reminded of George Orwell, who said that good prose is like a window pane. So the message should be such that it makes you see something clearly. You know, not the language should be simple, the structure should be simple, no jargons to be used. Then second is correctness, the second C of communication. The third is complete. The message should be complete, taking into consideration for whom is it said, is the language appropriate, when do the sender and the receiver, they get together, all these aspects, how is it to be communicated, all these have to be considered when you think of the completeness of the message. Then the next is the message should be, or the communication skill should have a concreteness. The message should be concise, that is brief, but without compromising on the quality of the communication. It should be very crisp, not verbose. And the 6th C is coherence. And last, courteous, to
in today's world, people would laugh at it, but remember, everyone gains when courtesy reigns. So when the message has to be communicated, keep the last one, although not the least, in importance. Now, this naturally brings us to the question, and generally leaders or every individual, they are always concerned with how to improve communication skills. If it's a skill which is to be nurtured, which is to be handled, then you must keep in mind that your enhancement will depend on the input, the input which you give for your growth, both personal and professional. So how do you intend to improve your communication skills? First of all is, I told you one of the steps of communication is listening. And so enhance your active listening. That is communication, remember, it's a two-way street. It's a two-way street. So active listening is a very important component of communication skill. Unless you give a patient hearing, either to the person who's hiring you or to your juniors at the workplace, it can be difficult, and that will make you a better person. Secondly, practice empathy. Empathy, I think one of the reasons why this skill developed, communication developed, as I stated earlier, this urge to share. If you share your joys or you share your sorrow with another person, or he shares it with you, unless you empathize with the person, the bond between two people cannot exist. So understanding others' feelings and perspectives, that forms the core, the base of communication. And empathy allows you to connect at a deeper level. It fosters trust and mutual understanding between two people. The third way you can improve your communication skills is by honing your non-verbal communication. That is, those aspects like the non-verbal aspects of communication, like your facial expression, the gestures. Remember, they are acting as supplements, to convey your message, to forcefully deliver the words which you are going to communicate. So align these features, your facial expression or your gestures, align them with your verbal message. Also, be aware of the other people's non-verbal cues to know about their thoughts and emotion. Remember, that will help you a lot in understanding other people. I have seen, like, if you stay with someone on a day-to-day basis, you know that a certain kind of cough or a certain kind of clearing of the throat means that something serious is coming from that end. So even they speak volumes about the person or the verbal message which is to follow. Next is build clear and concise messages. Always focus or aim for clarity in effective communication. In this, people say that you follow the pyramid principle. That is, start with the most important information, followed by the supporting details. Again, language should be simple. The next way you can hone your communicative skills is by seeking constructive feedback. Remember that the feedback is one of the steps in the process of communication, and this should be constructive. Always rely on good friends, trusted friends, who can say good things about you, but at the same time, they can tell you where or what they think is wrong when you're doing something. So rely on trusted friends. I think it's a rarity in nowadays, but still try to look for them. So
Depend on friends whom you can trust or the colleagues you can trust, more difficult, I think. And the feedback, what they give, keep them as important tools for improving yourself. Remember, Nindak Niyare Rak, the same formula. And embrace these feedbacks as catalysts for your growth. The next is developing a growth mindset, or a mindset which is positive, which will help you better yourself, help you break the mental barriers when you communicate. So if you aim at skill development, always approach it with the firm belief within you that your dedication, your effort can enhance that ability. See the challenges which you face in life as learning opportunities instead of hurdles, and embrace new techniques in this world of technology, and welcome feedbacks once again. The last is the last way you can improve your communication skills is by engaging in public speaking. Because remember, in Greece and all, ancient times, rhetoric was one of the subjects. It was a discipline on its own. So people used to study rhetorics just like philosophy. So public speaking is a time-tested formula and an excellent means to sharpen communication skills. When you speak at a community event, or when you participate in a public speaking club, or when you deliver a presentation professionally at work, so all these experiences will build up your confidence. They'll boost your confidence and also lend you a poise. So practice public speaking, speaking clearly, maintaining eye contact with the audience, and utilize tonal variations to engage the attention of the audience. I wish I could do now. I don't know how many of you are listening carefully. And the importance we see all these are practical steps which will ensure a continuous improvement in your communicative skills, leading to meaningful connections, enhancing the overall quality of your interactions. This importance of skill development is all the more pronounced in business ventures. We have the American entrepreneur, Richard Branson, who claims that, I quote, "Survival in business requires a synergy of skills," close quotes. So being an entrepreneur requires qualities, as one has to tackle multiple challenges. So honing both technical skills and communicative skills go a long way in shaping your personality, which will play a crucial role in presenting you as an able entrepreneur. Communicative skills also help in personality development. Much of what has been said, point-wise, I'll deal here. I won't go into detail. But remember that a person who's there to lead a group, to lead his team members, he has to have certain qualities which make him exceptional, which make him a notch above, or keep him a notch above the rest. So communicative skills will help you develop your personality. First of all, in expressing yourself. Only when views are articulated will people listen to you. Help you in building relationships when you connect with others in meaningful way. So remember, a good conversation acting like a bridge between people, two people. So active and patient listening and understanding others will help you build trust and leave a positive impact on your personal and working relations. Then resolving conflicts and taking decisions, I already have explained. Your professional advancement, because on the professional front, your personality, your success
will go hand in hand. Very often I've heard, people, even a simple thing, you have numerous examples in literature. People who are good, quite learned, but controlling a class is beyond them. Now, one of the reasons is this, what I'm saying just now, the communicative skills, how they help you to develop your personality. You have instances of R.K. Narayan. He said for him, tackling or taking care of a class was more difficult than writing books. Similar thing happened with T.S. Eliot. So your personality and your success go hand in hand, and communicative skills will help you in your maintaining your helping to develop your personality growth. And so far as entrepreneurs are concerned, they value communication skills. They contribute that to teamwork, leadership, and overall efficiency. So students, think of your communication skills as a key to unlocking career opportunities and success in later life. It also helps in taking criticism in a better manner. Generally what happens that when you are criticized, we tend to become defensive, we don't like being criticized. So when you have an idea about better communication skills, you can handle criticism in a better way. You listen, and you as the Dalai Lama says, you don't react as soon as you hear something bitter or any wrong allegation put against you. You respond to it. So that means you listen and think before you answer. If the criticism is valid, thank the other person for their input. If you have any questions, ask them to give them more details. Ask them why or what makes them allege the thing that they're saying. Remember that nobody has all the answers, and all of us have only different perspectives of the same message. So, and then finally, you admit when you are wrong. And if necessary, if you think the other person is right, have the courage to apologize. Take your mistakes with a tinge of humor. It'll make it easier to deal with them in future. And also finally, remember to learn from your mistakes if someone points it out. It's not that you are right all the time. Then good communication skills will cultivate confidence in you. And we know in today's world, the importance of the crucial role that confidence has in someone's personality. Communicative skills help in building that confidence, and you tend to have more followers. If a person walks in a room, the poise, the way he walks in, the traits of his personality, they do communicate things, and people, and they at the same time, they send out positive signals, and people tend to connect with them in a positive manner. So it helps to communicate. Already what you want to say, already people have a good opinion of you. So already the communication has begun. With your personality, you make an impression. You impress them. And ultimately, developing your leadership qualities. Of course, we have seen that if leaders can share their vision, they come forth as confident, authentic, and inspiring. So in essence, these communicative skills help in personal development, can be considered as the seeds of success. By consciously cultivating and nurturing these skills, you will boost your career, professional life, and also foster continuous personal growth. Remember what Sandberg says: as you start your options for career, focus on building your skills, not your resume. So you can understand the importance of skills in
bettering yourself as you embark on your journey of future life. We see the importance of skills as we have World Youth Skills Day, and it reminds us about the importance of investing in skills of young people. A winner, remember, is someone who recognizes his God-given talents, works his tail off to develop those talents into skills, and then uses these skills to accomplish your goal. With this, I wish all of you all the best for the future. May you embark on a path filled with exciting opportunities, have access to new experiences, and develop the skills that will open doors to a prosperous future. With these words, I rest my words and my views for today. Thank you. Who's taking over? Lalit, thank you so much, ma'am. Yes, ma'am. Thanks a lot, ma'am. Such a wonderful, enlightening, and engrossing lecture. These are really gems. I just wish I could have had such classes from you earlier in my career. And I'm sure now the participants are really benefiting from it. Thank you once again, ma'am. And if you have questions, they can. Anjali has some question. Mm-hmm. He says, ma'am, there are moments when we know what to say, but the fear of being. What is the question? She's saying there are moments when we know what to say, but fear of being misunderstood prevents us from communicating. How can we move? Fear of being misunderstood prevents us from communicating. How can we? Fear of being misunderstood. This is the skill you have to develop, Anjali. This is the skill which you have to develop. Once you have that confidence, we talked about confidence building. We talked about personality development. What are you scared of? Being rebuffed? Communicating on a personal level or professional level. Can you type it? Communicating on a personal level or a professional level. Feedback link, someone is asking. Ma'am, there is one question by Krishna Murari, that is there any role of speech in effective communication? Role of speech in effective communication. I just said, you know, when a teacher is when you are giving entering into the public domain and you are lecturing or you are giving a speech, you can gauge from the look on the face of the audience
And then you can bring variation in your pitch to engage the attention of the audience. High pitch, low pitch, because there is when also I can hear you. I can. Please unmute. Do not unmute yourself. Mute yourself. Or if you mute yourself. The pitch you have making public speeches, Murari, and you have seen good orators, you have seen good speakers, and you know that the quality or the way they are held in esteem is because of the variation in the pitch. They know, especially the public speakers, you know, they have their And please unmute yourself. And please unmute yourself, ma'am. We can't hear you. Please unmute yourself. Oh, how it happened? So I was saying that about the pitch. You must have heard of orators, good public speakers. You know that pitch does delivering lecture in a classroom. Pankaj Kumar Singh, if know any previous something he had written, I forgot. So pitch does matter, especially in public speaking. You know, you have heard of, and that is the distinct manner by which the person is known. It adds to his being overcome our fear in public communication. Okay. Expose yourself, Haripriya. The more you expose yourself, डर के आगे जीत है बेटा. The more you expose yourself to public speaking, you'll overcome your fears. Murari, if you have in mind two different orators from the political field today, remember Bajpayee ji and remember Modi ji. Both of them are orators, speak in Hindi. Do you think pitch matters in their speech? I personally believe I haven't heard the more speech of Atal Bihari Vajpayee, but I have heard the speech of Honorable Prime Minister, and I personally believe that there is a role of pitch in effective communication. So that's why I have asked here. And yes. And even in personal, when you're talking secretly, then your pitch will be low, remember, with your close friend. Otherwise, you'll be loud enough. Ma'am, one more question I was supposed to ask. Just if there is, if I am teaching anything, is there any scene of melancholy tone? Then we should say in melancholy voice. Yeah, I should say randomly. No. Your pitch will, and in fact, you know, if you're so engrossed, your pitch will modulate itself according to the feel of the lines. Okay. Get me? Thank you. Yes. Ma'am. They'll if you are so involved, if you are effective, that when you are teaching it, naturally your pitch will change. Okay. And that helps. Remember the actors who are speaking. Yes. Unless they bring, unless they change their pitch, unless there are tonal variations, they won't be able to communicate. You know, flat reading won't help. Just saying all their dialogues in a flat manner. They are also communicating. Remember, when they are delivering a dialogue, they are also communicating. So it should touch you in the right manner. The words should affect you in the right manner. And of course, suppose if a person laughingly says about a person's death, that doesn't suit, no? The tonal variations have to be brought in. The pitch does matter. Very important. Thank you, ma'am.
So that there are loads of questions coming up. I think the students are very much interested, for so many questions are Yes. there to be seen. So one question is from Muskan Kumari that, ma'am, we are more conscious about grammatical mistakes during communication. How to overcome this? How to overcome grammatical mistakes? Muskan, you are conscious, you are in PG graduation, where? Inter? A student of graduation? Muskan, you can unmute yourself and answer ma'am's question. Student? Intermediate or graduation? Ma'am, I'm in PG. You're in PG. Okay. Now see, I was telling Haripriya, see, unless we shed this inhibition, we will not learn. We are conscious, and that is why we step back. Yes? This is what you mean? Yes, ma'am. You step back. But so far as I have come across even for the last discussion, you had a question, and even now you have asked a question in English. I don't think there is any problem, and I don't think you are conscious of it. That is in itself, the answer to your question. Try to not think over it too much. Try to build that confidence that yes, you learn by mistakes. Even students who are young in school, they are trying to speak. They do. Even we as school students, we used to make mistakes. Be conscious of it, and if you think you remember that, oh yes, I made this, try to overcome it in your next attempt. And the only way, I keep telling these people in my class, the only way, and this is a big inhibition for Bihari students, every batch I keep saying that please talk in English when you are in the department. Because despite all intelligence, despite all sincerity, despite all the labor that they put, our students lag behind when they have to speak in English outside, I think. So the only way to overcome is to practice it more. Remember, I just said to Haripriya, when you overcome your fears, then you are a winner. And practice is the only thing which will make you perfect. As soon as you will not believe that there are, for long, some students talk so that they can talk in English, because they think that that is necessary in today's world to build their what should I say, the skill of talking in English. And that is the only way. Joining classes, English speaking, and also listen to English news either on the TV or on the radio. Read newspapers. That way, that all these steps will help you overcome the problem which you are talking about. Every batch I have been repeating this. Talk amongst yourselves in English, because here at least you are on the same plane in the classroom. And that is the concern of all the students. At home, we don't have that environment. Outside, we don't have that environment. So at least when you are here amongst yourself, talk in English. Muskan, answered? Satisfied? No. Yes, ma'am. Yes, thank you so much. I am satisfied and I'll work upon it. Nice to hear. And why are you scared? You speak well. Just a little more practice. Okay, ma'am. Thank you so much. Ma'am, you've answered the question. Thank you very much for giving them such
inspirational words. Now I think they will work upon it. Thank you. Just keep our fingers crossed. Thank you, both of you, my colleagues. Thank you. Thank you for giving me this opportunity. Pleasure is all ours, ma'am. We always wanted you here with us. Okay. Ma'am, one more question. Yes. Haripriya, yes. Ma'am, in a lot of certain times, it happens like we have some ideas or words in our mind, but we are not able to think or communicate it properly. As in personal, professional, what? She wants to say, ma'am, that she's not able to translate her ideas into words. So how can she help? So, Haripriya, the next time I catch you jabbering in Hindi, I'll ask you this. No, class. ma'am. Yes, only practice will help you. The more you speak, the more efficient will your language be. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. You don't need to translate. Then you'll start thinking English. Get me? Yes, ma'am. Constant practice will make your mind tuned to that modus operandi. When as soon as that an idea will come, the phrase will come, the words will come. Okay, ma'am. Okay. You want to next speaker? Sagar Kumar is here. Okay. Thank you, ma'am. Now we'll move on to our next speaker, Mr. Arvind Kumar. Has he joined? Yes, I'm audible. Yes, you are. Let's start your Okay, introduction. just a minute, sir. I'm going to introduce you. Mr. Arvind Kumar is a domain skill trainer, sent our city, RSP Jivika corporate trainer, master trainer in NISBA, that is National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development, MSDE, Government of India, senior faculty in Institute of Entrepreneurship Development, Bihar, Government of Bihar. And he is the right person now that people should put to answer their questions. एक सफल उद्यमी कैसे बने, उसके क्या challenges हैं, और आप कौन से कदम उठाएंगे एक सफल उद्यमी बनने के लिए. And इनके बारे में कुछ और मैं बता दूं कि he has also given his contribution in the low-cost toilet manufacturing, which was Muzaffarpur was the pilot district for it, and he has successfully launched that project. He's been giving trainings for beekeeping, honey processing, food processing, motorcycle repairing, mobile repairing, computer repairing, steel furniture manufacturing, bronze and brass-based utensils and idol statue manufacturing, vermicompost manufacturing, mushroom manufacturing, aromatic and medicinal plants, ready-made garment manufacturing, beauty parlor, copy manufacturing, ferro-cement technology products like bricks, sanitation and water purifiers from sand and soil, dairy products, products based on Panchagavya, livelihood programs for BRS personal entrepreneurship awareness. Now, in such a vast scope of trying to build up an enterprise, I think now the participants, you have full scope to focus and what this faculty is going to share his ideas upon. So, sir, you're most welcome. You can begin. Okay, thank you, ma'am. Good afternoon to you all, and myself, Arvind Kumar. First thing I would like to ask, should we start only in English, only in Hindi, or in bilingual? Make it bilingual or your students?
Okay. Students will be Thank you. comfortable in bilingual. The language. Then entrepreneurship के विषय में हमें कहा गया है बताने के लिए मैं इस सेशन की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करना चाहता हूँ कि एक मूर्ति बनाने वाले, मूर्ति तराशने वाले मूर्तिकार से एक व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हारे हाथ में एक छेनी और हथौड़े है, तुम इस चट्टानों में मूर्तियां कैसे बना लेते हो? तो बहुत सहज सा जवाब दिया उस मूर्तिकार ने कि मैं इस छेनी और हथौड़ी के माध्यम से इसमें के बेकार पत्थरों को काट काट करके हटा देता हूँ, मूर्तियां तो इसमें छिपी हुई है। इन सच वे एंटरप्रेन्योरशिप हर व्यक्ति में है, उद्यमशीलता, उद्यमिता हर व्यक्ति में है, हर पर्सन में है, छिपा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर इतनी बेकार चीजों की परत बैठ चुकी है जो उसे निखरने नहीं देती। और खास करके आज के समय में स्कूल कॉलेजों में भी काफी जोर दिया जाने लगा है। हमें एक बार मौका मिला एलएस कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी में एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग देने का अवसर मिला था। Tamil Nadu, it's little bit hard to me to understand the Hindi language. So do you please speak in English? It's a kind request from a student from Tamil Nadu. या कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं है? हाँ, तो एंटरप्रेन्योरशिप के विषय में काफी भ्रांतियां थी, काफी कंफ्यूजन्स थे। एक्चुअली ये बिल्कुल और एक एस्पेक्ट है कि एजुकेशन, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इस तीन में बहुत थोड़ा थोड़ा सा का अंतर है। इसे समझना काफी जरूरी होता है। एक्चुअली अभी जो हम लोगों की बेसिक एजुकेशन का क्षेत्र चल रहा है वो एंटरप्राइज सेटिंग के लिए नहीं है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम ऊंची से ऊंची डिग्रियों को लेकर के और अच्छी से अच्छी नौकरियां प्राप्त करें। हाँ, कुछ हद तक स्किल जो है, हुनर जिसे कहते हैं, वो इस मामले में कैसे इंटरप्राइज सेट करे इसकी काबिलियत देता है। बट आप मालिक कैसे बनेंगे एक इंटरप्राइज सेटअप करके, इसकी पढ़ाई थोड़ी सी और अलग होती है। और जैसे आप लोग इंटर, मैट्रिक, ग्रेजुएशन के लेवल पर उन परीक्षाओं को पास करने के लिए कुछ किताबों करते हैं, मैं समझता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए शायद आपको कुछ बुक्स किन्हीं के द्वारा बताया गया है या नहीं, जिसमें आपको ये शिक्षा मिले, यह माइंडसेट बने कि हम मालिक कैसे बन सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध है बाजार में। मैं चाहूंगा कि बहुत ज्यादा नहीं, अगर एक दो पुस्तकें आप खरीद करके सेल्फ स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग के बहुत सारे आयाम, डायमेंशंस खुलेंगे कि हमें कैसे आगे प्रोसीड करना चाहिए और हम अभी कहाँ पर हैं। जिसमें कि पहली किताब तो बहुत प्रचलित है, एक है बड़ी सोच का बड़ा जादू, डेविड जे स्वार्ज का है। इसका हिंदी एडिशन भी उपलब्ध है और यह आपके सोच को विस्तार करने में काफी हेल्पफुल होगी। हाँ, दूसरा पुस्तक है सवाल ही जवाब है। यह इसके राइटर है एलेन पीज।
इसका भी हिंदी एडिशन मौजूद है। ये 2 पुस्तकें मैं समझता हूं कि अभी आप लोगों के लिए काफी है पढ़ना, और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है। इसका हिंदी इंग्लिश दोनों एडिशन मौजूद है। कॉस्ट भी हमको लगता है 400-500 रुपए का होगा मैक्सिमम। लेकिन इन पुस्तकों को आप जब भी पढ़ें तो 2-2 पन्ने पढ़ें, और नोवेल की तरह नहीं पढ़ें। पढ़ने के साथ उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करें, एसिमिलेट करने की कोशिश करें कि इसमें कहा क्या गया है और करना क्या चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज जो शुरू से हम लोग सोचते रहे हैं, करते रहे हैं, वस्तुतः एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल हमारे माइंड सेट पर आधारित एक सोच है, एक विचार है, और उस तरह से कार्य करने की शैली हमें बनाती है। तो जो हम पहले से करते रहे हैं, मैं बहुत सारे जगह ट्रेनिंग देने जाया करता हूँ, वहां पर मैं पूछता हूँ कि अभी तो ऑनलाइन क्लास में हम ऐसा कुछ कराने का मौका नहीं मिल पाएगा, लेकिन कभी ऑफलाइन ऐसा होगा तो एक सिमुलेशन और एक्सरसाइज एंड गेम के थ्रू भी मैं उन्हें यह आभास अवश्य कराता हूँ कि हम जो भी पहले से करते रहे हैं, सोचते रहे हैं, और उसका रिजल्ट जो पाते रहे हैं, मैं पूछता हूं कि क्या आप अभी अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं या इससे बेटर कुछ करना चाहते हैं? जवाब तो आता है कि बेटर करना चाहते हैं। तो फिर मैं एक्सरसाइज कराता हूं, उसमें थोड़ा सा पहले के जो ट्रेडिशनल हम करते रहे उससे हट करके कुछ करना पड़ता है। और उसके बाद मैं पूछता हूं कि आपको कंफर्ट ज्यादा किसमें मिला, पहले वाले जैसे करते रहे हैं अभी किए हैं उसमें, या बाद वाले में? तो उनका जवाब आता है पहले वाले में। आता है कि आप जब तक अपने में माइंडसेट में बदलाव की स्थिति नहीं लाएंगे, और इस पहले बदलाव अपने विचार में, और विचार के बाद उसको कार्य में जब तक नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट पहले वाला ही आते रहेगा। भले ही आपके विचार हो कि कुछ हम नया रिजल्ट चाहते हैं, तो नया रिजल्ट चाहने के लिए नया तरह से काम करना पड़ेगा, और नए ढंग से जब आप काम करेंगे तो आपको कुछ पेन महसूस हो, कुछ कसमकस महसूस होगी कि ये थोड़ा पटांग लग रहा है, पहले ही जैसे करते रहे थे, सोचते रहते थे, उस तरह से ही अच्छा था। तो यही आप माइंडसेट एंड फिजिकल एक्टिविटी कर पाते। अब रही बात कि हम कोई भी काम क्यों करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का शुरुआत कहाँ से होता है, तो इसके लिए एक डीएनए मॉडल है। पहला अक्षर डी का मतलब होता है डिजायर, एन से होता है नीड, और ए से होता है एक्शन। तो हर आदमी की कुछ न कुछ इच्छाएं होती है, बहुत सारी सोचते हैं, और हम उस चीज को हासिल करें, ये हमारी इच्छा होती है। लेकिन वो इच्छा हमारी आवश्यकता कब बनती है? आवश्यकता तब बनती है जब हम उसे पैसे से परचेज करते हैं, और उसके लिए हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हमारी नीड बनती है। और इसी पैसे को कमाने के लिए हम कोई ना कोई काम करते हैं। तो काम करने के 2 रास्ते हो जाते हैं। एक हो जाता है कि नौकरी करे, दूसरा जाता है स्वरोजगार करे। दोनों का स्कोप अलग अलग है। नौकरी करने में आप जितनी ऊंची पढ़ाई करते हैं, मतलब ये होता है कि आप मैट्रिक जो किया वो एक छोटा टोकरी माथे पर रखे हुए है, इंटर किया उससे बड़ा टोकरी है, ग्रेजुएशन किया, मास्टर डिग्री किया, पीएचडी किया, तो ये टोकरी का साइज बड़ा हो जा रहा है, ढोना है अपने माथे पर। कार में होता आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, और तो 4-5 लोग को रोजगार दे रहे हैं, और उसके थ्रू जो आपकी कमाई हो रही है वो आपका लाभ का साधन, अर्निंग का साधन बनता है। मुझे लगता है कि कोई एक आदमी व्यक्तिगत रूप से कोई काम करता है, जैसे कोई एक घड़ी बनाने का हुनर सीख लेता है, स्किल सीख लेता है, और वो घड़ी बनाने का दुकान खोल लेता है,
तो मैक्सिमम मैं दे। हेलो, क्या बात कर रहे हैं आप लोगों तक? हेलो, am I audible? Yes, you're audible. हाँ, सुनाई पड़ रहा है। तो थोड़ा सा इंटरेक्ट कर अगर बात जाती हो, जैसे एक आदमी घड़ी बनाने का हुनर सीख लेता है, जानता है, और वो अपना दुकान खोल करके बैठ जाता है, तो दिन भर में समय दे सकता है। मैं 1 घंटा 10 घंटा, लेकिन अगर वो कोई घड़ी रिपेयरिंग का दुकान खोलता है और उसमें आप 4 घड़ीसाज को बैठाता है, घड़ी बनाने वाले को बैठाता है, तो वहां पर उसकी कमाई टाइम लीवरेज के सिद्धांत से बढ़ने लगती है और उसको 5 आदमी की प्रोडक्टिविटी मिलने लगता है। में यही बहुत बड़ा फायदा है कि स्वरोजगार करते हैं तो हमारा अर्निंग का स्रोत काफी मल्टीपल वे में आगे बढ़ता है और हम अच्छी कमाई करते हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां थी, तो 80 के दशक में एक इंटरनेशनल सर्वे हुआ। यह सर्वे मैकवर एंड कंपनी यूएसए ने DII अहमदाबाद, एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद के साथ मिलकर के किया गया, जो कि इंडिया के साथ साथ अब्रॉड भी किए गए, और जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे उन पर यह किया गया था, और उसका जो रिपोर्ट निकल करके आया वो बेहद चौंकाने वाला था। बस मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं, समय कम है, बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करनी है आपसे। बस ये समझ लें कि उद्यमिता के विषय में कहा गया कि यह न किसी भाषा पर आधारित है, आप अंग्रेजी जान रहे हैं, अच्छा हिंदी जान रहे हैं, संस्कृत जान रहे हैं, उर्दू जान रहे हैं, इस पर आधारित नहीं है, बियॉन्ड है। भाषा, धर्म, राष्ट्र, राज्य, देश, जेंडर, के मेल है फीमेल है, किस रेस के है, किस कास्ट के है, इस सारे चीजों से ऊपर है। सवाल है कि तो आखिर इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है? उद्यमी बन कैसे सकता है, उद्यमिता बढ़ाई कैसे जा सकती है? तो उद्यमी बनने के लिए बस मैं बहुत ही एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहता हूं कि मैग्नेट को आप लोगों ने देखा होगा, समझा, मतलब छुआ होगा, जानते होंगे इस तरह से। तो एक सवाल है कि मैग्नेट बनाने के लिए वो मटेरियल क्या चाहिए हमें? तो मैग्नेट के लिए ऑब्वियस है कि मटेरियल लोहा, एलॉय होता है, आयरन मेन कंपोनेंट होता है उसका, आयरन चाहिए। इन सेम वे कि अगर हम मैग्नेट ही बनाना चाह रहे हैं और उसके लिए अगर मटेरियल पीतल या तांबा यूज करें, तो क्या कभी वो मैग्नेट बन पाएगा? ये कभी भी संभव नहीं है और कतई संभव नहीं है। सवाल है कि जो भी एजेंसी या सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, इस तरह से कि एक क्राइटेरिया गया कि मैट्रिक पास करने वाले को, इंटर पास करने वाले को, ग्रेजुएशन पास करने वाले को इतना तक का वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। शायद ऐसा कंसेप्शन है कि दे करके उद्यमी बनाया जा सकता है, और इसलिए साबित की जा रही है, होती रही है, केवल पैसे के लिए, पैसे के दे करके हम उद्यमी को नहीं बना सकते हैं। उसके लिए उसका माइंडसेट उस तरह का तैयार करना होगा, होना चाहिए
बनाने के लिए जा सकता है। आवाज कुछ जा रही है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है क्या? हाँ, क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? मेरी आवाज जा रही है वहां तक ना ठीक से? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा कट जा रहा है बीच में। थोड़ा इंटरेक्शन आप लोग भी करते रहिए ताकि ये लगे कि नहीं हम लोग मतलब ये है ऑनलाइन है। तो जैसे कि मैग्नेट बनाने के लिए वो मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल जो है वो आयरन होना चाहिए। उसी तरह से एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इसके लिए कुछ रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स हैं। वो रॉ मटेरियल्स कोई धातु नहीं है, कोई टेंजिबल चीज नहीं है, वो दिखाई देने वाली चीज नहीं है। उसके लिए सब सर्टेन क्वालिटीज हैं। तो कौन कौन से वो क्वालिटीज हैं जो इंटरनेशनल सर्वे के दौरान निकल करके आए थे, मैं थोड़ा फोकस उस पर करना चाहूंगा कि उसको 5 कैटेगरी में बांटा गया था। पहला कैटेगरी था अचीवमेंट क्वालिटीज का। दूसरा कैटेगरी था स्कैनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटीज। तीसरा कैटेगरी था पर्सनल मैच्योरिटी का। चौथा कैटेगरी था इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटीज का। और पांचवा कैटेगरी था डायरेक्टिव एंड कंट्रोलर। इस 5 कैटेगरी को और इलेबोरेट किया गया, जिसमें अचीवमेंट जिसको हम कहते हैं, अचीवमेंट कहते किसको हैं? अचीवमेंट जब भी हम कोई अपने स्किल का, अपने सूझबूझ का, अपनी शारीरिक क्षमता का इस्तेमाल करके उसके बदले कुछ हम पैसा कमाते हैं तो उसे हम अचीवमेंट कहते हैं। या हम कोई क्रेडिट कमाते हैं या कोई प्रतिष्ठा पाते हैं तो उसे हम अचीवमेंट कहते हैं। इसमें कौन कौन सी और क्वालिटी समाहित है? तो पहला है पहल करने का, इनिशिएटिव लेने वाला वो पर्सनालिटी होना चाहिए। सीज एंड एक्ट ऑन अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी को हमने देखा और उसे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया। अब सवाल है कि अपॉर्चुनिटी हम बोलते तो हम आम भाषा में है, लेकिन अपॉर्चुनिटी हम पहचानेंगे कैसे कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है, सुटेबल है और हमें इसे पकड़ना चाहिए या हमें इस पर काम करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत सारी किताबें और परिभाषाएं, जानकारियां दी गई है बड़ी बड़ी। मैं आपको 2 शब्द बताता हूं। पहली चीज की एक अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट आइडिया, कुछ ऐसा करने का आइडिया जो आपको आकर्षित करे। और दूसरा, उससे मिलने वाला रेट ऑफ रिटर्न। ये 2 चीज अगर आपको ज्यादा सूट करता है तो आप समझ ले कि यह अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है और हमें अचीव करना चाहिए। रही बात की अपॉर्चुनिटी के विषय में भी आगे और कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हो सकती है मैं बताऊंगा। मुख्यतया हमारा ये व्याख्यान 3 ब्रॉड चैप्टर्स पर आधारित होगा, जिसमें पहला चैप्टर होगा जो एंटरप्रेन्योर बनने जा रहा है उसके लिए क्या क्राइटेरिया, क्या पैरामीटर्स हैं। दूसरा कि वो कौन सा एंटरप्राइजिंग करेगा, ये भी फॉर्मुलेटेड है। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पर कोई आदमी कुछ कर ले और उसमें सक्सेस हो जाए। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हमसे कोई पूछता है कि दिल्ली जाने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या होगा, अगर हम बाई प्लेन आते जाते रहे हैं, हमारे पॉकेट में इतना पैसा है, हमें उसके प्रोसीजर, टिकट कैसे कटाया जाए, वहाँ चेक कैसे कराया जाता है, कितनी देर पहले जाना चाहिए, जाया जाता है, इन सब चीजों की जानकारी है। मैं तपाक से कह देता हूँ कि बाई एरोप्लेन। अगर अगले की वो क्षमता नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है, वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो फिर वो आदमी क्या होगा, वो हतोत्साह होगा
और अपने आप को निराश मान करके बैठ जाएगा, या ऊपर वाले को दोष लगा करके बैठ जाएगा कि ऊपर वाले ने हमारे नसीब में हवाई यात्रा नहीं लिखा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उसके भी सर्टेन फनल स्टेप टेक्निक्स हैं जिससे हम पहले 2 4 5 अपॉर्चुनिटी को सेल्फ का शॉर्ट एनालिसिस करके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये सेल्फ का पहले करना होता है। देन आफ्टर दूसरा टूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मार्केट सर्वे का होता है। इस 2 टूल्स के आधार पर आपको सिलेक्ट करना चाहिए कि हम इंटरप्राइजिंग कौन सा करें, कौन सा हमें करना चाहिए, कौन सा करना है, ये डिसीजन लेना है। तो जो हमने 3 ब्रॉड चैप्टर्स बताए कि पहला, एंटरप्रेन्योर कौन हो सकता है। पैसा दे देने के बाद, दुकान खोल देने के बाद वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। लेकिन यहाँ कहलाने और बनने का मैं थोड़ा सा फर्क समझाना चाहता हूँ कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल आप ले लीजिए। किसी कुम्हार को आप घड़े पर, चाक पर घड़ा बनाते हुए देखा होगा। जब घड़ा बनाता है वो गोला चाक पर नचा करके मट्टी को गोला कर रहा है, चिकना कर रहा है। अगर उससे कोई पूछता है कि आप क्या बना रहे हो, तो ऑब्वियसली वो कहेगा कि मैं घड़ा बना रहा हूँ। लेकिन क्या वो घड़ा आपके यूज के लायक है? आप उस घड़े को परचेज करके उसमें पानी भर के पी सकते हैं? शायद नहीं। इन सेम वे आप समझ सकते हैं कि आप घर में रोटियां बनाते हैं, जब आटों को गूंथ करके उसका लोई काट करके उसको बेल रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा आप क्या बना रहे हैं, ऑब्वियसली आप कहेंगे कि मैं रोटी बना रहा हूँ। लेकिन क्या वो रोटी आपके खाने के लायक है? शायद नहीं है। तो ये खाने के लायक बनता कब है? जब आप इसको तावे पर रखते हैं और आंच पर उसको पकाते हैं, सेकते हैं, गर्म करते हैं, तब वो आपके खाने लायक बनती है। उसी तरह से घड़े को जो कुम्हार चाक पर नचा रहा है, वो कहलाने को तो घड़ा है, लेकिन आपके यूज के लायक नहीं है। वो उसको जब फिर भट्टी में ले जा करके उसको तपाता है, पकाता है, और तब वो आपके पानी पीने लायक बनता है। उसी तरह से उद्यमी बनने के लिए शायद पैसे का दे देना, पैसे से सहायता कर देना इनफ नहीं होता है। और यही कारण है कि इकोनॉमिक वर्ल्ड में हमेशा 80 और 20 का रेशियो बना रहता है। इट मीन्स कि पूरे 100% सीन में 80 जो है एंटरप्रेन्योर एग्जिस्ट करने वाले होते हैं, और 20 एंटरप्रेन्योर जो है वो एग्जिट करने वाले होते हैं। और हमेशा ये दौर चला रहता है, बट यह रेशियो, यह अनुपात 80-20 का बना रहता है। दैट्स वाई आज के समय में हजारों बिजनेस खुल रहे हैं, एंटरप्राइज खुल रहे हैं, और लाखों बंद भी हो रहे हैं। तो यह उसी इकोनॉमिक रेशियो, उसके इकोसिस्टम, उसके सिनेरियो का परिणाम है कि शायद वो मटेरियल ठीक से चयन नहीं कर पाया गया। और यही कारण है कि आज बैंकों का जो एनपीए हो रहा है, जो पहले पैरवी पार्टी करने के बाद लोगों को वित्तीय सहायता दी गई और उन लोगों ने उस चीज का फंड डाइवर्सन किया, शायद ये परिणाम आने वाले जनरेशन को काफी लंबे अरसे तक भुगतना पड़ा है। लेकिन रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद बहुत सारे पॉलिसीज चेंज हुए, और अभी स्थिति ये है कि पैसे की कमी नहीं है कि हम, पैसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे सुधार किए गए हैं। हाँ, करने के लिए आपके अंदर क्या चाहिए, वो जो मटेरियल है, वो जो पैरामीटर हमने बताया है इंटरनेशनल सर्वे का, उस पर आप अपने आप को कसेंगे, अपने आप से पूछेंगे। क्योंकि सेल्फ से बात करना, सेल्फ से पूछना थोड़ा सा टफ टास्क तो जरूर होता है। अभी तक के समय में हम लोग किसी दूसरे के विषय में सर्टिफिकेट देने को कहा जाए कि वो कैसा है,
तो शायद तनिक देर नहीं लगेगी कहने में कि वह गोरा है, वो काला है, वो चोर है, वो बेईमान है, वो सत्यवादी है, वो परिश्रमी है, वो आलसी है। यानी दूसरे के लिए सर्टिफिकेट अगर इश्यू करना हो तो शायद सेकंड के भी देरी नहीं होती है। लेकिन जब ही अगर एक क्वेश्चन हम स्वयं के विषय में पूछे, आपके सेल्फ के विषय में पूछे कि आप अपने विषय में केवल अपनी 2 खासियत और 2 कमजोरी को बताइए, तो मैं समझता हूं कि शायद आपको 5 मिनट सोचने का समय जरूर लग जाएगा। उसके बाद भी आप बता सकेंगे कि नहीं, वो कहना मुश्किल होगा। तो सेल्फ के विषय में यह एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सेल्फ की पढ़ाई है। उद्यमी कौन है, कौन बन सकता है, कौन बनेगा, कितना % वो सक्सेसफुल होगा, इसके लिए बहुत सारे टूल्स हम लोगों के पास होता है। उससे हम मेजर करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कितने % आपके अंदर है। ये सब बिल्कुल टेस्टेड है और थर्मामीटर की तरह है कि शरीर में डालते हैं, आपके शरीर का तापमान, आपके शरीर की गर्मी कितनी है, ये तुरंत पारे की तरह बता देता है। और ये कोई व्यक्तिगत ये हमारी देन या उपज नहीं है, ये ऑलरेडी सारा चीज तय किया जा चुका है, टेस्ट किया जा चुका है और इससे मेजर करके रिजल्ट दिया जा चुका है। 2-3 टूल्स का नाम मैं आपको बता सकता हूं, जैसे एंटरप्रेन्योरल एप्टीट्यूड है, यह आपके मानसिक एंटरप्रेन्योरशिप की % कितनी है इसको दर्शाता है। एंटरप्रेन्योर साइकोग्राफ है, जिससे आपकी मनोदशा क्या है, वो आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बताएगा। एंटरप्रेन्योरल क्वोशेंट क्या है, इन दोनों के आधार पर आपने उपलब्धि क्या हासिल की है अभी तक, वो 0 से लेकर के 10 तक के स्केलिंग पर कहा ये किया जाता है। जोहारी विंडो जो आपके सेल्फ का टेस्ट करता है, ये बताता है कि आप अभी मैं बहुत सारे विद्वान स्पीकर्स के ये सुन रहा था, मधुशालिनी मैम का भी मैंने सुना कम्युनिकेशन पर कि कितने तरह के हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये लगा कि जोहारी विंडो, आप दूसरे से बात करते हैं, कितने खुलते हैं और कितने अपने आप को छिपा करके रखते हैं, यह आपका स्केलिंग कर देगा। फाइरोबी मॉडल वो आपके बिहेवियर से संबंधित तथ्यों को स्केलिंग करता है। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, सैकड़ों, मैं कितना नाम लूं आपको, मैं 2-4 जस्ट एक ये बता रहा हूं कि यह आपके उद्यमी कौन हो सकता है, ये बिल्कुल नपा तुला आपको एकदम तराजू पर तौल करके बता देगा कि टू व्हिच एक्सटेंट यू विल सक्सीड इन योर फ्यूचर। तो यह उद्यमी कौन का होगा, पहला मुख्य चैप्टर हमारा पॉइंट। दूसरा, उद्यम एंटरप्राइज कौन सा हम करें, कौन सा हमें करना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे लिस्ट हैं हमारे पास। मैं कोशिश करूंगा उस सबका PDF आपका जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर भेज दूं, आप पार्टिसिपेंट्स को अवेलेबल कराएंगे। और तीसरा जो ब्रॉड चैप्टर हमारा, ये व्यवस्था कैसे, हाउ टू मैनेज। तो व्यवस्था में बहुत सारी व्यवस्थाएं आती है, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम कैसे करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारा कहाँ से हो, कितना तक का हो, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग हम कैसे करें, मैन पावर मैनेजमेंट हम कितना कैसे करें, ताकि हमारे एंटरप्राइज में मैन पावर कम से कम यूज करते हुए जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा उसका कॉस्टिंग कम से कम आए, जो कि मार्केट में आजकल कंपटीशन के मार्केट में वो टिकने लायक हो सके। तो इसके लिए भी वो
बिल्कुल साइंटिफिक टूल्स बनाए हुए हैं कि आपको 3 कैटेगरी के मैन पावर रखने हैं। एक स्किल्ड रखने हैं, एक सेमी स्किल्ड रखने हैं और एक अनस्किल्ड रखने हैं। अब मैं 3 कैटेगरी का बता रहा हूं, इसे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। 3 कैटेगरी का मतलब कदापि नहीं है कि 3 आदमी को रख लें। 3 आदमी जब आप रखेंगे तो 3 आदमी की सैलरी देनी होगी और मालूम होगा कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बना उसका कॉस्टिंग इतना ज्यादा हो गया कि अगर 5 रुपया 10 रुपया आप उस पर प्रॉफिट लेकर के बाजार में जब पहुंच रहे हैं तो मालूम हो रहा है, आप कह रहे हैं कि सपोज कीजिए कि हम चना का सत्तू हम बना रहे हैं और बहुत अच्छा क्वालिटी का सत्तू बना करके बाजार में जब हम लेकर के जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये 100 रुपये किलो पड़ा। तो जैसे ही आप बोलते हैं 100 रुपये किलो पड़ रहा है, आप उसमें अपना 10 रुपया मार्जिन रखे हुए हैं, तो जिसे आप बेचने जा रहे हैं, आप चाहे रिटेलर को दे या होलसेलर को दे या कस्टमर को दे, वो तुरंत कहेगा कि 80 रुपये किलो तो हम खरीद करके हमेशा लाते हैं, 90 रुपये किलो तो हम हमेशा लाते हैं खरीद करके। तो आप उसको लाख अपना चेहरा अपना कलेजा फाड़ करके दिखलाइएगा कि मैं 1 नंबर 100% प्योर चना का सत्तू बनाया हूँ और बहुत मन लगा के बनाया हूँ, काफी मेहनत से बनाया हूँ, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। वहां पर सीधे बात आ जाती है पैसे पर। तो वहां पर जब आप घर से पैसा लगा करके अपना प्रोडक्ट तैयार करके बाजार में पहुंचेंगे और वहां पर इस तरह का रिप्लाई जब रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, दैट्स वाई कि वहां से आपको फिर पेविलियन बैक होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। मैं अभी सुन रहा था, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स इंटरैक्ट कर रहे थे कि पैसा लगाने के बाद हम खोल तो लेते हैं, वो कर्ज का पैसा होता है और फिर हम जब नहीं सधा पाते हैं तो हम सुसाइडल एप्टीट्यूड की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो कर लेते हैं। तो यह सवाल है कि इसमें बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं। सबसे पहला, पैसा जो लगाया गया उस आदमी ने क्या अपना सेल्फ का स्वोट एनालिसिस किया? हमारे पॉजिटिव पॉइंट क्या है, हमारे निगेटिव पॉइंट्स क्या है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के अनुसार अभी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल क्या है, और जो अपॉर्चुनिटी हम स्कैन कर रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी के थ्रेट्स क्या क्या है। अगर पहला यह काम किए होते कि मैं क्या व्यक्तिगत रूप से सक्षम हूं इस व्यवसाय को करने के लायक या नहीं। दूसरा, जो प्रोडक्ट मैं तैयार करने जा रहा हूं, तैयार करूंगा, उसका स्टेटस क्या है मार्केट में। तो उसके लिए क्या हमने मार्केट सर्वे किया? और जब हम डिमांड सप्लाई का एनालिसिस ही नहीं कर पाए कि कितना % मार्केट सैचुरेट है और कितना बच रहा है जो हम कवर कर सकते हैं, उसके अनुसार हमें किस कैपेसिटी का मशीन खरीदना चाहिए जो उतना उत्पादन कर सके, उसका कॉस्टिंग क्या आएगा, और जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसका उतना खपत हो रहा है या नहीं। हम उत्पादन करके घर में अगर रख लेते हैं तो इससे भी हमारा कैपिटल जो है सो डैम्प होता है। तो ये चीज मार्केटिंग मैनेजमेंट से संबंधित, यानी व्यवस्था कैसे, हाउ टू मैनेज, इससे रिलेटेड चैप्टर आता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे करें, रॉ मटेरियल का या प्रोडक्शन शेड्यूल का, रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट हम कैसे करें, रॉ मटेरियल हमारे लिए रिक्वायर्ड है। अब सपोज कीजिए जैसे हमने एग्जांपल दिया कि चना का सत्तू बनाना है, तो सत्तू बनाना, सत्तू बेसन उद्योग हम खोल रहे हैं और हम सत्तू जाकर के चना जाकर के रिटेलर के यहाँ से लेंगे तो वो हमें देगा 80 रुपए। तो क्या हमने इस पर वर्कआउट किया कि हम कौन सा स्रोत पकड़े रॉ मटेरियल लेने के लिए कि हमको कम से कम प्राइस में मिल सके अच्छी क्वालिटी। तो आप कहेंगे कि फिर हम होलसेल दुकान से लेंगे तो कुछ कम पड़ेगा। वो भी एंटरप्रेन्योर ऐसा हो सकता है तो डायरेक्ट किसान के पास पहुंच करके वहां से वो परचेज कर ले।
तो जो उसको 40 रुपए परचेजिंग आ रहा है वो आपको 90 रुपए 80 रुपए परचेजिंग आ रहा है। तो यहीं से कॉस्ट कटिंग होना शुरू हो गया कि आपका कॉस्टिंग क्या आ रहा है प्रोडक्ट का, मशीनरी के लिए। बस इसमें 6 एम्स पर ही कॉन्सेंट्रेट होना है उद्यमी बनने के लिए। उद्यमी का परिभाषा बहुत सारी किताबें लिखी गई है, लंबी चौड़ी मोटी मोटी है। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बस 4 लाइन में आपको परिभाषा बता देता हूं, अगर आप चाहें तो उसको नोट भी करेंगे। उद्यमी वह है जो प्रोडक्ट के रिसोर्सेज को, उत्पाद के संसाधनों को बाजार से निश्चित मूल्य पर इकट्ठा करता है और उसमें अपनी कला कौशल एंटरप्रेन्योरशिप का इस्तेमाल कर, स्किल का इस्तेमाल कर जो माल तैयार करता है, जो प्रोडक्ट तैयार करता है, उसे वह अनिश्चित मूल्य का जोखिम उठाते हुए अनसर्टेन, हम तैयार कर रहे हैं 100 रुपए का हमारा कॉस्टिंग आ रहा है, लेकिन बाजार में जा करके हम समझ रहे हैं तो हम नपा जा रहे हैं सीधे कि हम तो 90 रुपए पहले से हमको मिलते रहा है। तो यहाँ पर मूल्य की अनिश्चितता है। तो अनिश्चित मूल्य का फिर भी वो काम छोड़ता नहीं है, छोड़ना नहीं है उसको। अगली बार से वो इम्प्रूव्ड अपने इस टूल्स का इस्तेमाल करके, इस पर वर्कआउट करके और इस तरह से स्रोत को तलाश करके अपने प्रोडक्ट को कोशिश करेगा कम करने का, और कम करके तब फिर बाजार में उतरेगा। तो जहां भी फाइनेंशियली हम नफा और नुकसान से जुड़ते हैं उसका नाम हम रिस्क देते हैं, रिस्क फैक्टर। तो रिस्क मैनेजमेंट भी एक अलग चैप्टर है। रिस्क मैनेजमेंट पर अगर बताना शुरू करूंगा तो फिर ये कम से कम 3 घंटे का चैप्टर होगा। लेकिन नटसेल में आपको बता दूं कि कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी गोल हम जिसे लेते हैं, उसके 2 मुख्य पार्ट होते हैं। एक पार्ट नोन होता है, एक पार्ट अननोन होता है। तो नोन इज टू अननोन का रेशियो जब 1 आए, उस गोल को आप जरूर परचेज करें, उस चूज करें, सिलेक्ट करें और उस पर आप अपना वर्कआउट करें। अगर रेशियो जरा सा भी गड़बड़ाता है, अगर नोन पार्ट 75% है और अननोन पार्ट 25% है, तब आपको उस काम को करने में मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। Why we lose the interest? This is the deep study and formulated. In same way, अगर कोई गोल हमने तय किया, उसका हम मात्र 25% नोन है उससे और 75% अननोन है, तब भी हमें उस काम को करने में मजा नहीं आएगा। तो फिर हम कौन सा काम करते हैं? करते हैं वो जो एक रेशियो बहुत तराजू के पलड़े पर तौला हुआ तो नहीं होता है कि 50% नोन और 50% अननोन। हाँ, 10% प्लस माइनस लेकर के आप चल सकते हैं। ये 60-40 का भी रेशियो हो सकता है, 45-55 का भी रेशियो हो सकता है, 35-65 का भी रेशियो हो सकता है। तो इतना चलेगा। लेकिन बिल्कुल 25 और 75 का रेशियो होगा तो वो आप लाख किसी ने थोप दिया हो या आप किसी के दबाव में एक्सेप्ट कर लिए हो, उस काम में आपको मन नहीं लगेगा, और जब मन नहीं लगेगा, आपको मजा नहीं आएगा, तो उस काम में सफल होने की संभावना काफी कम हो जाती है। तो ये चीज आपको तय करना होता है कि हम कौन सा बिंदु में हमको करना है। ये तय है कि कहा गया है एक स्लोगन बहुत अच्छा कि उद्यमिता के विषय में कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु बढ़ना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। इट मीन्स इसमें सफलता के लिए एक पेट वर्ड है, स्काई इज द लिमिट। आप बाय डिंट ऑफ योर एंटरप्रेन्योरशिप कितनी ऊंचाई तक आप जा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन
सबसे पहले आप अपने आप को जरूर टेस्ट कर लीजिए कि हम चुंबक बनने के ख्वाहिश तो रखते हैं, क्या चुंबक का मटेरियल बन पाए हैं कि नहीं, और नहीं बन पाए हैं तो हतोत्साह नहीं होना है। हाउ टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, इसका भी टेक्निक है, उसका भी टूल्स है। वो सारी चीजें ट्रेनिंग में हम लोग बताते हैं, डेवलप कराते हैं। क्योंकि पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है जो बहुत बचपन से इसका बनना शुरू हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे दूं। एक कहा जाता था कि पर्सनालिटी पहले के समय में कि स्टैग्नेंट है, लेकिन बाद में ऑटकिन ने अपने रिसर्च के आधार पर इसको काटा और कहा कि नहीं, यह डायनामिक है। और हमारे अंदर पर्सनालिटी का विकास कैसे होता है। जैसे कुछ कुछ व्यक्ति को आप देखते होंगे कि बहुत कॉन्फिडेंस होकर के काम कर रहा है, कुछ कुछ व्यक्ति ये करता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो इसकी बुनियाद कहाँ से पड़ी? इसकी बुनियाद उसको 0 से 1 ईयर में, बच्चा जैसे जन्म लेता है और पहले साल में, उस समय में उसको किसी चीज की जरूरत है, मदद मिली, उसको प्यार मिला, भौतिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति हुई, जो पेरेंट वो कर रहे हैं, तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंट लेवल बनते जाता है। और जिन्हें नहीं मिलता है वो अविश्वासी ज्यादा होने लगते हैं। उसी तरह से 2 से 3 साल में स्वायत्ता, ऑटोनोमस वर्सेज सस्पिशियस, ये आता है। स्वायत्ता बनाम संदेह। स्वायत्ता कब आती है? 2 से 3 साल का जब बच्चा होता है तो चलना, दौड़ना, चढ़ना शुरू करता है, कुछ खींचता है, कुछ उठाता है, वो अपने मसल्स पर कंट्रोल करना लगता है। और इस तरह से कुछ कुछ नया करके उसे लगता है कुछ हम नया उपलब्धि हासिल किए, कुछ नया अचीवमेंट हासिल किए, तो वो उसके अंदर एक स्वायत्ता, अपने से निर्भर होकर के कुछ करने की क्षमता बढ़ती है। वहीं पर बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह से रखते हैं कि नहीं, बच्चा है, छोटा है, गिर जाएगा, अगर साथ में जाना है तो उसका साथ में चल रहे हैं, उसका हाथ उंगली पकड़ के चल रहे हैं। यहाँ तक कि वो माँ बाप के दिमाग में तो बच्चे का वो फिगर हमेशा है, शुरू से अंत तक रहता ही है, रहेगा ही। वो बड़ा भी हो रहा है तो नहीं नहीं, बच्चा है, बेटा है मेरा, इसको ये कुछ हो जाएगा, डर के मारे, संदेह के मारे, तो तुरंत उसको अम्ब्रेला लगा करके ये कर दिए हम। उस बच्चे में, उस पर्सनालिटी में हमेशा संदेह का माइंडसेट डेवलप होता है, वो ड्राइव डेवलप होता है, और आगे जाकर के वो उसकी कार्यशैली बनती है, वो उसका वर्क स्टाइल बनता है। उसी तरह से 4 से 5 साल में इनिशिएटिव लेने वाला है या क्राइम करने वाला है, ये उसकी बुनियाद पड़ती है। 6 से 11 साल में वो परिश्रम करने वाला है या लेजी होगा, यह पर्सनैलिटी का फैक्टर उसके अंदर आता है। 12 से 18 साल में वह अपनी पहचान बना सका है, उसकी कुछ बनी, या वह भूमिका भ्रम में है, वह स्पष्ट नहीं है कि हम किस रोल में हैं, हमको करना क्या चाहिए, हम पढ़ाई करें कि बिजनेस करें। जब ऊपर से किसी से गाइड किया जा रहा है तो हो रहा है कि फलाना का बच्चा पढ़ रहा है, माँ बाप कर रहे हैं, और तुम ये चीज, इतना पैसा तुम पर खर्च किया, इतना समय तुम पर खर्च किया, तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, बार बार रिजल्ट तुम्हारा फेलियर हो जा रहा है। तो वह लड़का, वह बच्चा भूमिका भ्रम में आ जाता है, हमें कौन सा रोल मॉडल में जाना चाहिए। और यही कारण है, आज के समय में तो खैर एजुकेशन में भी बहुत सारे सुधार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किए गए हैं। पहले जो था कि एक साइंस स्ट्रीम में लेकर के कोई पढ़ रहा है तो वो घिसटाते पढ़े या दौड़ते पढ़े, लेकिन पढ़ना साइंसी स्ट्रीम है। तो ऐसी स्थिति अभी नहीं रह गई है। अभी आप जिस विषय में अच्छा कर सकते हैं उस विषय को लेकर के पढ़िए और उसमें अच्छा कीजिए। तो यह पहचान बनाम भूमिका भ्रम 12 से 18 साल में आने लगता है। 18 से 30 वर्ष में आत्मीयता होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति आपका एक भावनात्मक स्नेह, सोच,
एक लगाव पैदा होता है, और ये अगर नहीं बन पाते हैं तो अकेलापन महसूस होता है। तो हमारा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप उनको इतनी छूट दे दें, आप उनको ये संस्कार दें, आप उनको ये सोच दें कि किस सीमा तक तुम्हें चलना चाहिए, किस सीमा तक आगे बढ़ना चाहिए, ताकि उसको लोगों के साथ एक जुड़ाव का भी फैक्टर डेवलप होना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि रूम में अकेले बंद बंद बस केवल मंदिर में पूजा करते करते इस तरह के पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में आ जाए कि हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुनिया तो मरणशील है, अरे करना क्या है, सबको तो एक दिन मरना ही है। ये चीज बस थोड़ा सा का डिफरेंस होता है, कैसे डेवलप किस एज में होता है ये ध्यान रखना एक माँ बाप का बहुत जरूरी ये होता है। खास करके इन चीजों को मैं जब नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का ये कराया करता था डिपार्टमेंट इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से, तो उस समय में ये चैप्टर चाइल्ड साइकोलॉजी का, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का मैं दिया करता था, और कैसे उसको डेवलप कराया जाए उसके लिए टीचिंग मेथड्स पर हम काफी टूल्स अपना डेवलप किए थे और उन लोगों को बताया करते थे। नेक्स्ट 30 से 45 वर्ष के उम्र में प्रोडक्टिव है या हम स्टैग्नेंट हो गए हैं, हमें कुछ करने की क्षमता है, अगर है तो अच्छी बात है, स्टैग्नेंट हो गए हैं तब आपको फिर से वो जागृत करने की जरूरत पड़ेगी। ये सारा चीज केवल कहने सुनने से नहीं होता है, इन सारी चीजों के लिए हम लोगों का जो 15 दिन का 1 महीने का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का मॉडल बनाया हुआ है, वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑफ इंडिया EDII अहमदाबाद के द्वारा, और खास करके अभी मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ निस्बड के साथ उन लोगों के द्वारा यह डेवलप किया गया है। तो उसमें ये सारे हेलो। हाँ जी। ऐसा है सर, हम लोगों के पास समय की कमी है, थोड़ा इनको अच्छा। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बता दीजिए, किस स्कीम से इनको लाभ मिलेगा। अच्छा गवर्नमेंट अच्छा। स्कीम्स है जो इनको अपना लोन वगैरह के लिए या एंटरप्राइज खड़े करने के लिए गवर्नमेंट से सहायता मिल सकती है। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको ये कर लूँ, समाप्त कर दूं। तो ये आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का चीज फैक्टर जो है सो आपके एंटरप्रेन्योरशिप में सहायक होता है। अगर कम बेसी मात्रा है तो ऐसा भी नहीं है कि वो आप उसको डेवलप नहीं कर सकते हैं, उसको डेवलप करने का तरीका बनाया हुआ है। दूसरी चीज है कि एंटरप्रेन्योर का टाइप जो होता है, बस एक निचोड़ में आप समझ लें कि खुद को डिसाइड करें कुछ हम नया क्रिएटिव सोच पाते हैं कि नहीं। अगर इनोवेटिव है तो एंटरप्रेन्योर का है मटेरियल, आप इमिटेटिव है कि नहीं, चलो अगर कुछ नया अपने से नहीं सोच पाए तो कुछ नकल करने की, कुछ कॉपी करने की क्षमता है कि नहीं। या फेवियम है, लाभ के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर ऐसा मौका आएगा तब मैं शुरू करूंगा। या ड्रोन टाइप के हैं कि नहीं हमको करना है तो यही करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो these are the types of entrepreneur you have to decide। दूसरा, आप खुद का एक टेस्ट जरूर ये करें, अगर इंटरैक्टिव होता थोड़ा तो अच्छा रहता। ईंट का यूज पार्टिसिपेंट्स से अगर हम आपको एक दे रहे हैं सवाल कि अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन वर्क आप क्या यूज कर सकते हैं, क्या इंटरेक्शन है संभव पार्टिसिपेंट्स से? ये इसका जवाब। हेलो मैडम। हाँ, इंटरेक्शन होगा बच्चों के साथ। अच्छा चलिए, तो लास्ट में किया जाएगा, सोच करके रखें हम ईंट का यूज क्या कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन वर्क, ये देखना है, ये बताना है। जब हम इंटरेक्शन होगा तो बताइएगा। दूसरा, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बहुत सारे स्कीम्स आ चुके हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा
एक तो अभी बिहार के सिनेरियो में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, इसमें सरकार 10 लाख का लोन मुहैया कराती है। इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट है उसका लिस्ट है हमारे पास, तो अगर होगा तो मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप में। उसमें कौन कौन से मशीनरी लगते हैं, उस कॉस्ट क्या आता है, वो सारी चीजें बनी हुई है। तो 10 लाख का लोन इसमें मिलता है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक, महिला, हर SC ST, हर कैटेगरी के लोगों के लिए इसमें अप्लाई करने का स्कोप है। यह प्रायः जुलाई से लेकर के अक्टूबर के बीच में इसका पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ बिहार का डिपार्टमेंट इंडस्ट्री का खुलता है, उस समय अप्लाई किया जाता है। आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। PMEGP है जो केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें आपको 25 लाख तक का लोन, 25 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिलता है। इसमें भी शहरी क्षेत्र के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए 25%, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 65% सब्सिडी का यह आता है, प्रोविजन है। अगर आप कुछ खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, फूड प्रोसेसिंग के लिए, तो PMFME स्कीम है, उसमें आप लोन ले सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यह सारी प्रक्रिया बहुत, आप लोगों को ऑफिस जाके भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। ये सारे चीज ऑनलाइन होता है। आप घर बैठे अपने लैपटॉप और मोबाइल से ये कर सकते हैं, या कहीं साइबेरिया में जाकर के आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। मुद्रा योजना का है, मुद्रा लोन का, छोटा हो बड़ा हो अमाउंट का, उसका आप ये ले सकते हैं। इसमें भी 3 कैटेगरी बनाए गए हैं। मुद्रा का शिशु है, किशोर है और तरुण है। शिशु के लिए 50,000 रुपए तक का, किशोर के लिए 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख तक का है, और तरुण के लिए 50 लाख तक का लोन का स्कीम इसमें दिया जाता है। ये सारे चीज कोलेटरल फ्री है, आपसे कुछ मॉर्गेज नहीं कराए जाते हैं। और स्टैंड अप इंडिया का है, स्टार्टअप इंडिया का है। इसके अलावे अगर आप कहीं पशुपालन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो गव्य विकास निगम के द्वारा है। अगर बकरी पालन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो भेड़ एंड बकरी समेकित विकास योजना है, अभी हाल तक उसका अप्लाई किया गया है। इसके अलावे अगर आप इंटरप्राइजिंग में ही जाना चाहते हैं तो PM विश्वकर्मा योजना है। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना अभी शुरू की गई है, इसका पिछले 20 फरवरी तक लास्ट डेट था अप्लाई करने का। और ये बहुत सारे स्कीम्स हैं जो छोटे से बड़े तक का ये आप कर सकते हैं। 50,000 से लेकर के 1 लाख, 25 लाख और 1 करोड़ तक का स्कीम का फायदा आप उठा सकते हैं। बशर्ते कि केवल यह नहीं देखिए कि किसमें सब्सिडी कितना है, आपको काम करने की क्षमता किसमें है, ये जरूर चुनाव कीजिए। और अपॉर्चुनिटी क्या है, कौन सा हमको करना चाहिए। एक चीज तय मान लीजिए कि एंटरप्रेन्योरशिप को जो पैसा कमाने के लिए अंतिम विकल्प के रूप में चुनते हैं, इस चीज को अपने माइंडसेट से जितना जल्द हो सके खत्म कर दीजिए। इसलिए कि यह लास्ट विकल्प नहीं होता है, यह पहला विकल्प होता है। भले ही आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कीजिए, अच्छी बात है, कम से कम इंटर ग्रेजुएशन ये सब चीज होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोच करके पढ़ाई कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हायर एजुकेशन लिए बिना तो बन ही नहीं सकता है, तो मैं आपको इतना स्टडी अपना हमने जो किया है उसका हम वास्ता देते हुए आपको बता रहे हैं कि वर्ल्ड के टॉप 10 मिलियनायर का आप ऑटोबायोग्राफी उठा करके आप देखें तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली दशक में शायद आधे ने कॉलेज का मुंह भी नहीं देखा है, उसके लिए कोई हायर स्टडी नहीं किया है, और वो अच्छे स्टडी करने वाले को अपने यहाँ नौकर बना करके रखा है। बस उसकी सोच मैनेजरियल सोच है, वो एक अलग क्वालिटी है एंटरप्रेन्योरशिप,
इसके लिए हायर एजुकेशन की नीड नहीं है। आप ले रहे हैं तो अच्छी बात है। कहा जाता है कि सोना में सुगंध, तो ये कहावत के रूप में हम लोग यूज करते हैं। बहुत व्यवहारिक नहीं है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही व्यवहारिक पहलू है। तो आप ये समझ ले कि सोना अगर आप कह रहे हैं तो आप एजुकेशन ले रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप उसमें अगर आ जाता है, स्किल डेवलपमेंट आ जाता है, तो इसमें सुगंध वाली बात होती है। हाँ, मैं एक चीज और बता दूं कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये बिल्कुल एकदम दिमाग में शार्पली इसको बैठा ले। एंटरप्राइजिंग का मतलब है कि आप किसी चीज में हुनर सीखने में समय नहीं बिता रहे हैं। आप 4 आदमी को, 5 आदमी को जो हुनर सीखे हुए हैं उसको अपने यहाँ नौकर रख रहे हैं, उसको स्टाफ रख रहे हैं। आपको फाइनेंशियली मैनेज कैसे करना है, हमको शेयर बाजार से करोड़ों की उगाही कैसे करनी है, इसके लिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ करके हम 4 साल का 5 साल का समय नहीं बिताएंगे। हम एक अच्छे खासे चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम 25,000 50,000 दे करके अपना काम करवाएंगे अपने यहाँ रख करके। और उस 4 साल में हम सोचेंगे कि और हम मार्केट कहाँ अपना रखे, रॉ मटेरियल कहाँ से हम खरीदे, मशीनरी कहाँ से खरीदे, किस कैटेगरी का खरीदे, किस ब्रांड का खरीदे, किस जगह से खरीदे, इसमें हम वो समय लगाएंगे। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको बहुत अधिक भटकने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बहुत ही कंसाइज रूप में 6 एम्स का एक फॉर्मूला डेवलप किया है, जिसमें पहला एम आपका होता है रॉ मटेरियल कच्चा माल होता है, उसका उस पर ध्यान देना है। दूसरा एम होता है मशीनरी का, तीसरा एम होता है मैन पावर का, चौथा एम होता है मनी का, पांचवा एम होता है मैप का, और छठा एम होता है मैनेजमेंट का। तो मैप मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ इसलिए कि अगर आप अपना कोई इंटरप्राइजिंग कर रहे हैं तो किसी न किसी, मान लीजिए कि एबीसी इंटरप्राइज आप लिखते हैं, तो एबीसी इंटरप्राइज तक कोई कैसे पहुंचेगा? आप कुछ नाम देंगे ना कि बनारस बैंक चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत। तो ये बिल्कुल मैप की तरह भारत के नक्शे से होते हुए ये बिहार पर आ रहा है, बिहार से फिर मुजफ्फरपुर आ रहा है, मुजफ्फरपुर से फिर बनारस बैंक चौक जा रहा है। दिस इज द मैप फैक्टर। और लास्ट फैक्टर जो होता है वो मैनेजमेंट का होता है। मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए आपको 2 साल का मैनेजमेंट करना होगा, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि थोड़ा 5 मिनट में आपको मैनेजमेंट की भी पढ़ाई पढ़ा दूं। मैनेजमेंट को जब हम तोड़ते हैं 3 भागों में, तो पहला पार्ट आता है मैनेज, दूसरा पार्ट आता है मेन, MEN, और तीसरा पार्ट आता है T। इट मीन्स मैनेज द मैन टैक्टफुली। और इसके विषय में किथ डेविस ने कहा था, अमेरिकी ये ने, कि when you dig a problem into very deep, you will find a man in the bottom। कोई भी समस्या हो रही है, उसमें जब उसकी खुदाई आप करते हैं तब तक खुदाई करते जाइए जब तक एक टीला नजर नहीं आए, खुदना बंद नहीं हो जाए। तो आप वहां पर गौर से देखेंगे तो एक आदमी खड़ा नजर आएगा। इट मीन्स भगवान ने जितना खूबसूरत जीव इस आदमी को बनाया है, शायद इससे खतरनाक जीव भी दूसरा इस धरती पर नहीं है। जिसने मानवता के लिए काम किया हो वो भी जीव उपस्थित है, अभी कर रहे हैं विश्व युद्ध से कैसे बचाया जाए। और एक ने एटम बम का निर्माण किया, वो भी मानव जो है सो इसी धरती पर आए थे और बना करके गए हैं। तो हमेशा उसका जड़ जो है सो मैन ही होता है, आदमी ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि मैनेज द मैन टैक्टफुली। तो ये 6 एम पर अपना ध्यान कंसंट्रेट रखना है, और आगे इस तरह का वर्कशॉप आयोजन हो तो फिर कोशिश करूंगा मैं कि इसके विषय में विशेष जानकारी दी जाए। और किसी तरह का कुछ क्वेश्चन हो? मैं समझता हूँ कि कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप, हाँ बोलिए।
Any question from you? No. क्वेश्चन पूछ रही हाँ हरिप्रिया है पूछिए। क्वेश्चन more and more we're taking. Sir, it is like gambling. They think that in future they will get profit after some time, and they start investing more and more by taking loans. हाँ तो हरिप्रिया का यही सवाल है ना। हाँ वही इसके दो मुख्य हैं प्रॉब्लम। एक तो कि जब एंटरप्राइज में कोई इन्वेस्ट करता है तो वो गैम्बलिंग की तरह होगी, जैसे जुआ खेल रहे हैं, पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, उसमें पैसे लगाते जा रहे हैं और लास्ट में जब ये नहीं सक्सेसफुल होते हैं तो सुसाइड की ओर बढ़ जाते हैं। हाँ तो हमने आपको दोनों सवाल के जवाब दे दिए हैं, आपने उसको ध्यान से नहीं सुना होगा हरिप्रिया जी। आप पहला चीज कि गैम्बलिंग की गेम और गैम्बल में अंतर होता है। एक चीज ये दिमाग से हटा दे कि एंटरप्राइजिंग गैम्बल है, एंटरप्राइजिंग गेम है। गेम में जो खेलने वाला आदमी होता है वो प्लेयर होता है। जैसे अगर कोई पहलवान कहते हैं कि वो दंगल लड़ता है, अखाड़े में कुश्ती लड़ता है, तो वो किसी के पीठ ठोकने पर और किसी के चढ़ा देने पर और किसी के पैसे का लालच दे देने पर वो दंगल में नहीं उतरता है। वो साल भर अपनी वो तैयारी करने के बाद वो उतरता है दंगल में और तब वो कुश्ती और लड़ता है और पहलवान कहलाता है। तो हमारी बात को शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि आप उद्यमी कहलाने वाले बनना चाहते हैं या रियल बनना चाहते हैं। पैसा लेने के बाद तो आप कहलाने लग जाएंगे, शटर खोल करके अपना दुकान लगा करके फैक्ट्री खोल के बैठ जाएंगे, वो कहलाने वाले होंगे। लेकिन बनने के लिए आपको जितने वर्क हमने 6 एम्स पर बताए हैं करने के लिए, उसको वर्कआउट करने के बाद, मार्केट सर्वे करने के बाद, हमें कौन सा काम करना है, अपॉर्चुनिटी सिलेक्शन, यह एक टेक्निक है। आप किसी से पूछ करके करेंगे वो चीज गलत हो सकता है। आप इसके विषय में अगर समय मिले तो मेरे नंबर पर आप बात करके आप काउंसलिंग ले सकते हैं कि आपको कैसे करना चाहिए, या समय मिले तो, या कहीं ऐसा ईडीपी कार्यक्रम यहाँ अगर होता हो तो उसमें आप भाग लेने का प्रयास कीजिए। वो एक कंसेप्ट है, वो बिल्कुल 5 मिनट में इस तरह से सॉल्व नहीं किया जा सकता है ना। तो ऐसा कोई भी चीज गैम्बल नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप में सब चीज का रास्ता बना हुआ है, तरीका बना हुआ है। आप उससे रूबरू होंगे तो आपको आसान दिखने लगेगा। एंटरप्रेन्योरशिप जितना आसान रास्ता तो कुछ है ही नहीं, नौकरी करना उससे ज्यादा कठिन है। लेकिन हम चूंकि उन रास्तों को जानते नहीं है इसलिए वो हमें काफी टफ लगता है। ठीक है, और बताइए। नहीं अभी अब बच्चों का सवाल नहीं है। तो मैं अपना सेशन समाप्त करूं। थैंक यू सब लोगों को। थैंक यू सर। और बहुत बहुत ओके। हेलो सर। बोलिए सर। प्लीज टेक ओवर नाउ फॉर द थैंक्स। हेलो जी बोलिए। सर कह रहे थे कि हम लोग तो नौकरी पेशा आदमी है, जी तो पेशा वाला आदमी भी मतलब सरकार से क्या ये लाभ ले सकता है, या फिर दूसरे अपने परिवार के मेंबर के नाम से हम लोग मतलब ये सब एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं? सर ये जानना चाह रहे हैं सर बस। परिवार के अपने लिए तो सर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने फैमिली में जिन 50 से नीचे हो जी सर। के लिए आप कर सकते हैं। बच्चे के लिए कर सकते हैं, जो 12वीं पास हो कम से कम वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो 12वीं पास नहीं भी है उनके लिए भी दूसरे स्कीम के तहत उस वित्तीय सहायता उठाई जा सकती है, ली जा सकती है। सर इसका आपने बताया सर कि कुछ 10-15 दिन का ट्रेनिंग होता है सर, वो कहाँ पे होता है, कैसे होता है सर, इसके बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी चाहिए। अभी तो निस्बत का ट्रेनिंग चल रहा है, मुजफ्फरपुर में नहीं आया है। लेकिन आप अपने कॉलेज में या कहीं आप इच्छुक हैं तो आप नाम इनरोल कर दें, या मेरा नंबर ले ले, संपर्क ले करके। स्किल ट्रेनिंग हाँ रूट सेट्टी में होता है, 15 दिनों का प्रशिक्षण, जो हुनर के लिए होता है, स्किल के लिए। रेडीमेड का है, ब्यूटी पार्लर का है, ये सब चीज का, गौ पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, ये सब चीज का होता है।
मशरूम उत्पादन का है, एरोमेटिक मेडिसिन प्लांट का है, बहुत सारे करीब 18-20 ट्रेड्स हैं इसमें करने के लिए। और शिप डेवलपमेंट का जो ट्रेनिंग होता है वो निस्बत के द्वारा अभी कराया जा रहा है। अभी खास करके छपरा, सारण, मढ़ौरा, डेहरी ऑन सोन, नालंदा, पटना में अभी हाल फिलहाल ये डेहरी चला मैं सर चल डेहरी के मैं सर डेहरी के लोकेशन में ही हूँ, तो सासाराम से हम बात कर रहे हैं सर। अच्छा। तो सर डेहरी में सर ITI है, उसमें होता है या दूसरे जगह पर होता है? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। बल्कि हमें भी ITI जाना था, लेकिन थोड़ा कुछ व्यस्तता की वजह से मैं नहीं जा सका। इनकी स्टेट कोऑर्डिनेटर हमें काफी प्रेस कर रही थी कि आप दिन सर जाइए ITI वहाँ EDP में। नहीं जा सका, मैंने दूसरे ट्रेनर को भेजा था। ITI में हो रहा है शायद, हमको लगता है वो अभी खत्म हो गया होगा, है ना। तो वहाँ पर जो अभी ऑर्गेनाइज किए होंगे, कोई की पर्सन होंगे, वाइस प्रिंसिपल वगैरह, उनसे थोड़ा सा आप संपर्क करके और विशेष ये ले लीजिए कि नेक्स्ट बैच कब से शुरू होने का है। जी सर, जी सर। बहुत सर इंटरेस्टिंग और बहुत फ्रूटफुल रहा सर, बहुत जानकारी मिली हम लोगों को। और ऐसे ही सर जानकारी हम लोगों को हमेशा देते रहे। आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका ज्ञान वर्धन बहुत अच्छा लगा धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर। 22 साल से तो मैंने मुजफ्फरपुर इन एंड अराउंड नहीं, कम से कम तो 10 से 15 हजार उद्यमियों को हमने जरूर मार्गदर्शन दिया है। मिलते भी हैं, बस हम कहते हैं कि बस सर को याद रखिएगा, केवल इतना ही काफी है। और आप भी बढ़े, आप सबों को केवल और भविष्य की कामना देखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सर, धन्यवाद सर, नमस्कार। सर मेरा एक और क्वेश्चन था। सर आप बोले कि जैसे जो बिजनेसमैन है वो लोग के पास उतना हायर एजुकेशन या वो लोग लो एजुकेशन में उतना एजुकेशन का जरूरत नहीं है। इंटर तो वो अपने चिल्ड्रन को उतना एजुकेशन क्यों दे रहे, क्योंकि उन लोग को तो फैमिली बिजनेस चलाना है। एजुकेशन देने के दो पर्पस होते हैं। बच्चे माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे इंस्टीट्यूशन में इसलिए भेजते हैं कि वो कुछ पढ़ सके तो पढ़ ले, और अगर नहीं पढ़ सके तो कम से कम लोगों से वो दोस्ती साठगांठ जान पहचान इतना कर ले कि उसके बैच का कोई लड़का अगर बहुत अच्छा टॉपर निकल रहा है तो उसको अपने यहाँ एंटरप्राइजिंग के समय बुला सके। आप ये नहीं कर सकते हैं कि उद्यमिता की राह बिल्कुल सीधी मतलब दिखने वाली होती है। और बस समय तो काफी कम है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक मामूली सा जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला आदमी, और वो 1500-2000 रुपया कमा रहा है, किसी दिन उसका मन खींचा या उसके मालिक ने उसको बुरी तरह डांटा, और उस दिन वो कह देता है सबों को कि मैं एक दिन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का मालिक बनूंगा। अब दूसरे दिन से जब वो पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं अपने ड्यूटी करने के लिए, तो उसके साथी सब चिढ़ा रहे हैं कि क्या भाई साहब, कब इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उद्घाटन कब कर रहे हैं, मिठाई कहिया खिलाइएगा और पूजा कब कराइएगा। और ये चीज हम सबों के साथ घटती है। वो भी एक मध्यम वर्ग का ही आदमी था, परिवार बच्चे सब कुछ उसके साथ थे, लेकिन उसने इस मध्यम वर्ग के लोगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी पकड़ ली थी कि ये लोग दूसरे का नुक्ताचीनी करते हैं। हमारे घर में क्या बन रहा है इसकी तरफ नहीं देखते हैं, लेकिन दूसरे के घर में क्यों कौन सा दाल बना है और कितना नमक पड़ा है इसका समीक्षा बहुत अच्छे से करते हैं। तो क्यों नहीं लोग के कान में एक ऐसा मंत्र छोड़ दिया जाए जो बिना सैलरी वाला स्टाफ बहाल हो जाए, और जब हमारी गाड़ी ट्रैक से उतरे तो ये हमें याद दिला करके फिर ट्रैक पर ला दे। और फिर वही होता था उसके साथ, जब वो कभी गोल को भूल जाता था कि हमको पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री लगाना है, तो दूसरे दिन पहुंचते उसके सारे साथी बिना फीस के वकील, बिना सैलरी के स्टाफ उनको ये मदद करते थे याद दिलाने में कि आप कब इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कब मिठाई खिला रहे हैं। और वो करते करते वो एक दिन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का मालिक बना। तो ये सोच वाले जो लोग होते हैं ना, कुछ जनरल 95% लोगों से अलग हट कर सोचने वाले होते हैं, और इन लोगों को प्रायः समाज में पगला का उदाहरण दिया जाता है, इन लोगों को नासमझ का उदाहरण दिया जाता है। इनकी समझ अगर ये 95% लोगों के समझ में आ जाती तो शायद डिक्शनरी से बेरोजगारी शब्द ही खत्म हो गया होता। ऐसा नहीं होता है। ये 5% लोग के सोचने समझने करने का ढंग ही शैली ही अलग होती है। इसलिए वो क्यों पढ़ाते हैं उसमें आप नहीं उलझिए, आप क्या करना चाहते हैं ये आप पूछिए हमसे। ओके, वेरी गुड सर, बहुत ओके सर, थैंक यू सर। ओके। Any more और questions?
एनी क्वेश्चन? चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि उद्यमी कौन है और उद्यमी बनने के क्या गुण होने चाहिए, है ना। डिजायर, नीड और एक्शन, ये डीएनए मॉडल आपने बताया, स्वॉट एनालिसिस बताया, बहुत अच्छी बातें बताई आपने जो बच्चों को बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। समय कम होने के कारण हम लोग और ज्यादा अभी नहीं समय दे पा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम हमारे यहाँ होता है तो हम लोग जरूर चाहेंगे कि आप अपना जो महत्वपूर्ण विचार मंतव्य दें। थैंक यू वंस अगेन सर। अब इसके साथ ही हम लोग प्रोग्राम की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मैं रितु मैम से नम्र निवेदन करती हूँ कि वो थैंक्स। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू ललिता मैम, मुझे वोट ऑफ थैंक्स की अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आज 28 मार्च 2024 को अर्थशास्त्र विभाग और अंग्रेजी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन महाविद्यालय के प्रचार की अध्यक्षता में किया गया है। महिला शिल्पकला भवन महाविद्यालय, जिसकी स्थापना ही महिलाओं में कौशल विकास के उद्देश्य से की गई थी, इस परिप्रेक्ष्य में आज के सेमिनार का विषय एक्सप्लोरिंग द यूजेस ऑफ स्किल एनहांसमेंट इन अनलेशिंग एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही प्रासंगिक है। इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के प्रथम दिन बिहार विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और पीजी हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट के प्रोफेसर पीएस रॉय सर, यूएसए से प्रोफेसर श्याम सिंह सर, बिहार विश्वविद्यालय से इंग्लिश डिपार्टमेंट की प्रोफेसर मधुभाषालिनी मैम, एलन मिथिला यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुकेश कुमार सर और इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार से मास्टर ट्रेनर अरविंद कुमार सर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। अब ये कार्यक्रम समापन की ओर है और धन्यवाद ज्ञापन की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। मैं रितु वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हेड ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, महिला शिल्पकला भवन कॉलेज से हूँ। आज का सेमिनार निश्चय ही हम सबके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। इस कड़ी में BRABU के प्रॉक्टर पीजी हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट डॉक्टर BS रॉय को मैं आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इस विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान की हम सभी को। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने व्यस्तम कार्यक्रमों के बावजूद हम सभी के लिए आपने समय निकाला और अपने विचारों और अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। एक बार फिर से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी प्रोफेसर श्याम सिंह सर का, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल और दूसरे स्किल पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की और अपने विचारों को हमसे साझा किया। सर, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी आज की कीनोट स्पीकर प्रोफेसर मधुशालिनी मैम को, जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल के डेवलपमेंट पर काफी विस्तृत रूप से चर्चा की, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक रहा। आपने बहुत ही सहज ढंग से हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर भी दिए और कैसे हम अपने अंदर ये सारे स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, इस पर भी आपने बहुत ही सहज ढंग से अपने उत्तर दिए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर मुकुंद कुमार सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि स्किल्स डिग्री का मोहताज नहीं होता है। अगर आप में कोई स्किल्स है तो एक्सपर्टीज बनिए, साथ ही साथ अपने अंदर दूसरे स्किल्स को भी डेवलप कीजिए ताकि आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सके। साथ ही आपने उद्यम को स्थापित करने के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के मास्टर ट्रेनर अरविंद कुमार सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने स्टार्टअप को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसके लिए आपने डीएनए मॉडल पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही आपने रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नमेंट पॉलिसीज
और स्कीम पर भी चर्चा की, ताकि हम कैसे अब अपने उद्यम में रिस्क को मिनिमाइज कर सके और जो गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती हैं इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए, उसके फायदा हम कैसे उठा सके। थैंक यू सर। आप सभी स्कॉलर्स को सुनना हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। निश्चय ही आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। हमारे प्रतिभागी भी आप सभी के वक्तव्य से अत्यधिक लाभान्वित हो रहे हैं। अगली कड़ी में मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर लोकमान रविंद्र प्रताप सर का, जिनकी अध्यक्षता में आज का ये सेशन संपन्न हुआ है। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी इस कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजर और हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट डॉक्टर विनम्रता मैम और को ऑर्गेनाइजर डॉक्टर नरेश प्रभा मैम, जिनके इनिशिएटिव और टेक्निकल सपोर्ट के कारण ही आज का ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो पाया है। आपका सानिध्य, प्रयास और उत्साहवर्धन हमेशा ही हमें कुछ विशेष करने के लिए प्रेरित करता रहा है। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मैं आप दोनों को सहृदय धन्यवाद देती हूँ। वोट ऑफ थैंक्स की अगली कड़ी में मैं इस कार्यक्रम की को कन्वीनर डॉक्टर शिल्पा भारती मैम का भी धन्यवाद देती हूँ, जिनके सहयोग से आज का यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। साथ ही में मैं इस महाविद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका डॉक्टर लक्ष्मी रानी मैम और वरिष्ठ शिक्षक मोहम्मद रईस सर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हमेशा कार्यक्रम को करने में हमारा सहयोग और उत्साहवर्धन करते रहे हैं। साथ ही मैं आभारी हूँ महाविद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं की, जिनकी सहभागिता कार्यक्रम में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप दोनों रूप से रही है। थैंक यू कि आप सभी के सपोर्ट और सुझाव से हम आज के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित कर पाए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ महाविद्यालय के सदस्य, सभी शिक्षकेतर कर्मचारियों को, जिनके सहयोग के बिना हमारा कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता, जिनकी सहभागिता से हम किसी भी कार्यक्रम का सफल संचालन कर पाते हैं। साथ ही यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया कर्मियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं इस ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वान जनों और हमारे कॉलेज की सभी स्टूडेंट्स और सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को न केवल ध्यानपूर्वक सुना और उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता भी दी। साथ ही इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए विदेश और देश के विभिन्न राज्यों से विभिन्न विश्वविद्यालयों से लगभग 200 प्रतिभागियों ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, जिनका मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। आज का हमारा यह कार्यक्रम सफल हो पाया। आप सभी को हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में कृपया फीडबैक फॉर्म जरूर से आप फिलअप कर दीजिएगा, ताकि हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू रितु मैम। Now, it is a custom that nobody speaks after the formal vote of thanks. But here I would like to intervene, and I would like to thank Dr. Ritu ma'am for her consistent support, who is also the convener of the seminar. So, because everyone has been thanked, but nobody has thanked her, that's why thank you so much, ma'am, for being a backbone for this seminar and helping us all in organizing it. And once more, tomorrow we will be having our technical session. So those participants who are willing to participate in the technical session will send their name, their institutional affiliation, and the title of their topic in the WhatsApp group that we have created. Thank you. हेलो विनम्रता मैम। हेलो। हाँ सर। कह रहे थे मैम कि इकोनॉमिक्स वाला जो टेक्निकल सेशन है उसका अलग लिंक रहेगा क्या? नहीं, टेक्निकल सेशन का एक ही लिंक है। देयर इज ओनली वन लिंक फॉर टेक्निकल सेशन, be it for economics or English students. The two parallel session links will be shared for students of MSKB exclusively. So you don't have to worry about that. All the other technical session details I'll send you in the group. Don't worry. Details will be sent in the group. Just give me the information who wants to present them. The rest of the details will be. Yes. थैंक यू मैम। लीव कर सकते हैं अब हम लोग? Yes. यस थैंक यू मैम।